ఇప్పుడారా
टीव्ही लाईव्ह करून टाक. तुमचं असं दिसतंय आता. थोडं हा फोटो हे करायला लागेल ना. मी इकडे हा तुम्ही पण दिसले पाहिजे ना सेंटर मध्ये. फक्त टीव्ही असा करा लॅपटॉप फोटो आणखी इकडे थोडस नाही बस झालं ना पुष्कळच्या थोडं वरती करतो ना. झालं ना. अच्छा ठीक आहे. आणखी थोडं फोटो तिकडे कर फोटो तिकडे कर.
वरती करू का? ते लोक आले नाही अजून. वरती काही नाही, मी वरती नेट पाहतो की अजून एक अरेंजमेंट करून झालं. जर बंद झाली तर तिथे पण लॅपटॉप चालू करून सेकंड फ्लोअरला हॉलमध्ये नेटचं नेट त्यांनी उतरवलं ना मगाशी. नेट ते चंदनच्या रूमचं नेट काय मग इथं आलं इथं रूम साठी मग वेगळं नेट घ्यायला लागेल. पूर्ण घरात रूमला वायफाय चालतच नाही ना. कोणतंही डोंगर डायरेक्ट 2000 रुपये डोंगर डायरेक्ट वायफाय चालू करून आईजवळ आहे का डोंगल विचारू. डोंगल कॉलेजमध्ये वापरते ती. जेव्हा तुम्ही बोला ना त्या तुमचं सगळं ऐकून
join होना है। मुझे अलाउ करते कि नहीं अलाउ कर स्टेबल म्हणतो Sir, good morning, sir. गुड मॉर्निंग Good morning. Good morning. Penchu aadi ikkadi unna. स्टेबल Sir, co-host everyone you all, sir. So Srinivas Guduru, Srinivas Komatipalli, Sir, good morning, sir. Samir and Keshav, Ram Maruri. Penchu aadi ikkadi. Ram Garu, are you on the line? Sir, co-host everyone you all, sir. So Srinivas Guduru, Srinivas Komatipalli, Sir, good morning, sir. Samir and Keshav, Ram Maruri. Ram Garu, are you on the line? Sir, co-host everyone you all, sir. Sir, కాస్త ఫేస్ మీద లైట్ తక్కువ సార్ మీకు ఈరోజు. ఇలా तू पांच व्हाट्सएप गेला సార్ కొంచెం ఫేస్ లైట్ పెంచగలుగుతారా? సార్ హరి సార్ Yes, చెప్పండి. ఫేస్ మీద లైట్ తక్కువ ఉంది. Naka? Okay, 1 second. ఇప్పుడు బెటరా? ఓకే లిటిల్ బెటర్ సార్. సార్ లెఫ్ట్ సైడ్ కూడా లైట్ తక్కువ ఉంది సార్. రైట్ సైడ్ ఉందా లైట్, లెఫ్ట్ సైడ్ లో లేదు. ఓకే ఒక్క నిమిషం. దీన్ని పబ్లిష్ కొట్టేసాను. రెడీ సీన్ ఇచ్చిన పబ్లిష్. ఇంకా వచ్చాను అది కాదు ఫేస్బుక్ పెట్టేశాను. याच्यावर जा ना ते फेसबुक वर जा ना. नाही हिला दिलं फक्त आम्हाला बंद करून ठेवलं लागेल पूर्ण. ये पहले लिंक पर डायरेक्टली करने. ओके सर, लाइटिंग ओके सर. फेसबुक
नमस्कार भाई साहब। इथे नाही काय इथे नाही येत use. तुम्ही मला हॉलचं म्हणतो. Can you hear Haditi? चालू आहे बरोबर. Yes, yes, I can hear you. Okay, thank you. बाबा राव जी, भाई साहब. यस सर, यस सर, यस सर. सर आवाज आ रही? नमस्कार, my dear and dear. नमस्कार. Yes. सर बाबा सर बाबा सर. सर आपका इंटरनेट ठीक ठाक नहीं है सर? नहीं है. आपका इंटरनेट बफरिंग हो रहे सर. सर हरी सर Yes, yes. అది బబన్ సార్ ఉన్నారు కదా, సార్ ఇంటర్నెట్ బ్యాండ్ విడ్త్ కరెక్ట్ లేదు. ఒకవేళ పాసిబిలిటీ లేకపోతే కనుక సెల్ ఫోన్ నుంచి లాగిన్ అవ్వమనండి సార్. Okay, okay. अच्छा, सचिन भैया, सचिन. अनस्टेबल बोलते. Raju, are you on the line? Raju. ఇంకా జాయిన్ అవ్వలేదు సార్ రాజు. Okay. Ram. రాలేదు సార్. సార్ ఈశ్వరే సార్. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, ఈశ్వరే సార్. Good evening, sir. Good evening, brother. సార్ సార్ ఫ్రమ్ మన టీమ్ సార్. ఒక్కసారి ఆడియో వాయిస్ చెక్ ఇస్తారని చెప్పేసి కనుక్కోవడానికి ఫోన్ చేస్తాను. 2 minutes మాట్లాడండి. So good evening all my brothers. Today we are conducting this the webinar with on the eve of the 7th August 2000. This is the 5th national convention conducted by the RASHTRIYA OBC MAHASANGH. And seventh day, the significance of seventh day is the VP Singh declared in the floor of the parliament that the Mandal Commission report will be implemented. Okay, so sir. that is the significance. Therefore, we have been fighting. Reservations are being implemented from 1993 only. That is from 1950 to 93, center was not implementing the reservations in favor of OBCs, but they were implementing the reservations in favor of SCs and STs. But hitherto the states were implementing, some states were implementing, the other states were implementing, but some other states were implementing reservations with a different percentage of the reservations in the employment. Sir, testing అయిపోయింది. Thank you. సో అందరు స్పీకర్స్ వచ్చారా చెక్ చేయండి బ్రదర్ ఒకసారి. జస్ట్ మేక్ సార్ స్పీకర్స్ రాలేదు సార్. మీరు వచ్చారు అండ్ ఈశ్వరే సార్ వచ్చారు, భవన్ సార్ వచ్చారు. My internet is working now properly. Perfect sir. Yes, yes, sir, we need lighting sir, face lighting. We need lighting. Lighting. बाबा राव जी थोड़ा लाइट ज्यादा, लाइट पूरा लाइट जलाओ. Extra, yes, extra light.
पूरा लाइट जलाना है। और सचिन भैया आया लाइन में? नहीं आए सर। रेखा बात సార్ ఒక వెబినార్ అయితుందమ్మా సార్ ఐఎమ్ ఇన్ వెబినార్ సార్ ది रोशन भैया आया लाइन में? ले सर। रेखा जी आए सर। रेखा जी, गुड मॉर्निंग रेखा, गुड इवनिंग रेखा जी। रेखा मैडम प्लीज अनम्यूट योर डिवाइस मैडम। मग मी पण तिकडून बसतो. मी पण तिकडून बसतो. एसीला कोणी हात लावला तिथे आधीच कशाला आता पण थंड करू इथं झालं तू इथे मला फोन लिंक दिली आहे ना रे.
हरीश टाटा वाला तो जूम लिंक क्रिएट से टाटा वाला ग्रैंड फाइनल ఉంది కదా గ్రాండ్ ఫినాలే Do you all see my screen? yes sir Okay. So we have 4 minutes to go. I just want to make sure that how many speakers are on the line. Sachin Bhaiya, are you on? Babaji, can you, how many speakers are on? Samir, you have the host privilege. Keshav, are you on? I'm on. This is Samir. Yes, sir. Yeah. Keshav? I'm here, sir. Yes. Are you ready with the bios? Yeah, we are. Okay, great. Yes. And do you have host privileges? Yeah, we have co-host privileges. Yes. When you have to monitor the people who are joining and allow them. Definitely. Both of you. Okay. And is Ram on the call? Samir, you need to coordinate with Ram also. Tell him the same thing. Okay, I will. I'll ask him right now. Okay, thank you. Samir, can you send me the final bios, please? Yeah, I'll send it to you again. Okay. And we're going live in 3 minutes. But make sure that Baban भैया आपने थोड़ा speakers को देख लेना कोई कौन अभी आने वाला है हम शुरू दोनों करें जॉइन होने वाला है इधर का नाना पटोले साहब भी ज्वाइन होंगे वडेट्टीवार साहब भी ज्वाइन अभी तक आए नहीं वो लोग इसलिए आ जाएंगे 5-10 मिनट नहीं अभी 2 मिनट में शुरू होना चाहिए ना हाँ हाँ मैं लगाता हूँ उनको फोन करो प्लीज चंतनो लिंक कर ले मैं चालू ये ना सर लिंक कर ले मानो दूसरा मोबाइल Just sent it. तो आना देखो चलो सुझाव दो Samir, when we start program, mute everybody and they need to unmute when they're ready to speak. Definitely. Okay. हरी सर Yes. पटोले सर ज्वाइन Okay, good. Okay. और कितने लोग आने वाला है? वडेट्टीवार साहब ज्वाइन हो जाएंगे अभी बाकी तो उधर के Dr. Praveen has joined. जगदीश ईश्वरैया है, आप है, मैं हूँ, 4 लोग अटेंडेंस है अभी. नाना पटोल जी ज्वाइन हो गया. वेलकम सर. और नरहरि साहब ज्वाइन होना चाहिए. फिर हमारा विजय साहब ज्वाइन होना चाहिए और तेजस्वी जी.
वो लोगों को देख लेना थोड़ा, ओ, उनको फोन करो प्लीज. Sir, ready, sir? Yeah. So brother Ishwaraya, so 8:31, do you want to wait some more time? You are on mute, brother. Okay. Yes, brother. Do you want to wait for 2-3 more minutes until the other people come? Okay. no problem. Let us wait. Okay. The main issues today, 7th August, 7th main issues are today. And the issues relating to the creamy layer and the BP Sharma committee and to liberalize the creamy layer. 3, 5, 6 are interrelated and correlated. Therefore, I will, before dealing that, just I will give a background. Hitherto under the Constitution, SCs or STs are being provided reservations in the education, employment and political, all in proportion to their population. So for the OBCs are concerned, as a matter of fact, the backward classes as defined under Article 16(4) means the socially backward classes. Socially backward classes are divided into 3 categories. That is untouchables, scheduled castes, Adivasis, scheduled tribes, and the other backward classes. To identify the other backward classes, though other backward classes were known, but the government was not honest in identifying the backward classes. Therefore, they have made a provision under the Constitution, under Article 340 of the Constitution, to make a study with regard to the social, educational, and their existing plight, and recommend the socially, educationally backward classes by identifying. Therefore, a commission, first commission was appointed Kaka Kellelkar. He submitted a report that was not accepted. Then again in 1979, the committee, the BP Mandal Commission was appointed. Then a report was submitted in 1980, but 10 years it could not see the light of the day. After 10 years, then VP Singh said, I will implement the Mandal Commission report on 7th. That was the declaration made on 7th August. Therefore, that is 1990. So that 2 memos were issued by the Ministry of the Social Justice, and those 2 memos for providing reservations, 27% reservations in favor of the socially educational backward classes, then questioned in the Supreme Court by the forward classes. These prior to questioning, they have had a very big hesitation.
Then backward classes people were also sleeping, and some very insignificant counter they have made it. But anyway, it's landed in the Supreme Court. Supreme Court delivered the judgment stating that yes, they have a constitutional right. It's a democratic country, and the reservations what the 27% recommended by the BP Mandal are very genuine and constitutional. Nana Patel sahab, namaskar. Acha, bhai sahab, 1 minute mein. Then Supreme Court delivered the judgment stating that, look, you have to give 27% reservations to the SCBC, social education backward classes. But by excluding the creamy layer. But Supreme Court also cautioned that while prescribing the creamy layer, it should not amount one hand giving 27%, and by unreasonable restriction of the creamy layer, it should not amount to take away the reservations given. That means Supreme Court was clear to give 27% reservations in favor of the OBC. That was understood properly, but they have failed to see that under the guise of the creamy layer, they have illegally fixed the creamy layer and unjustifiably applied the creamy layer, eliminated the most deserving people also. So they have started de-reserving from 93 onwards till today. Till today, the percent of reservations made in favor of the backward classes, that is SCBC, not even 30%, 13%. That means 14% they are de-reserving, and there are a backlog from all these years from 93 to till date. Therefore, our share is being taken away and enjoyed by the so-called the ruling community and the ruling class, because they have addicted and habituated to deprive the right of the backward classes. Therefore, now there is some elite people, they have been making the representation. When I was the chairperson, National Commission for Backward Classes, for the first time when this government came to power, started including the salary income in the creamy layer. I said, as per the report 1993-92 itself, the salary income cannot be clubbed to the income of the group 2 and below categories. There are cadre-based exclusion and the income-based. Cadre-based exclusion is the constitutional post, that is the ministers, chief ministers, governors, judges, and that constitutional post. So they come under the creamy layer. Then service category only directly recruited. Group 1 or Group A officer, class 1 or Group A officer. Get started in 2 minutes. We'll just, so you can, in 2 minutes. KCR, all the channels live now? Yeah, yes, sir. Ready. Okay, Facebook, YouTube link. Raju, are you on the line? Everything ready, sir. Raju, are you on the line? He's not. There is no Raju, sir. Yeah, Ramu, are you on the line? Ram? Ram also. Yeah, I am there. Yeah. So KCR, can you give Ram Garu the host privileges, please? Sir, 1 second. Liberty Foundation, right, sir? Yeah, that's correct. That's correct. Yeah. Co-host, right. Okay, sir. Done. Yeah. Okay. And KCR, you can start recording in 1 minute. Okay, sir. Right. Do I have the recording privilege, KCR, or no? Yeah, we are recording, sir. Okay, you're recording. Okay. Ram, can you record also, please? Okay. Samir, can you record also? Yes. Okay, please turn on the recording. So we're starting now.
Yes, we're going live now. Yes. So good morning, good evening, good afternoon. We have viewers from so many places today, and this is the 5th National Convention of RASHTRIYA OBC MAHASANGH. Today is Friday, August 7th. India, it's about 6:10 p.m. And in America, it's about 8:40 a.m. In London, it's 1:40 p.m. And in Europe, Central Time is 2:40 p.m. So today is a very auspicious day, August 7th. There's so many great people have initiated this national OBC movement. If you have not registered yet, please register at allindiabcfederation.com to attend the webinar and get an e-certificate. And you can watch live this show, allindiabcfederation.com, youtube.com, Mana TV, Lead India US, and facebook.com, Hari Panapali, usanettv.net, and also at All India BC Federation's Facebook homepage. My name is Dr. Hari Panapali. I'm the chairman of the Lead India Foundation and also chairman of the Advisory Council for All India Backward Class Federation. And I would like to welcome you all to this August gathering today. And we have several distinguished speakers today. We have Honorable Nana Patel, Speaker, Legislative Assembly, Maharashtra, Honorable Tejasvi Yadav, former Deputy Chief Minister, Bihar, Honorable Vijay Wadetwar, Minister for OBC, Bahujan Welfare, Maharashtra Government, and we have Honorable Justice V. Ishwaraya, Chairman, Higher Education, Judicial Commission, Andhra Pradesh, and he was also the National Commission on Backward Classes Chairman, and also he is the President of the All India Backward Classes Federation. Again, myself, Dr. Hari Panapali, Chairman of All India Backward Class Advisory Council and Chairman of Lead India Foundation. And we have Dr. Baban Rao Taiwade, President, RASHTRIYA OBC Mahasangh, who is hosting this event today. And we have from Bhopal, Sri P. Narahari, IAS, Commissioner and Secretary from Madhya Pradesh, and Dr. Praveen Kumar, Secretary, Social and Tribal Welfare Residential Schools, Telangana State. I would like to welcome you all this morning. And we have several supporting organizations, All India Backward Class Federation, CIC Group, Vision Digital India, Liberty Foundation, I Stand for the Nation, Spandana Foundation, NRI Wala, and we have Global South Forum, Manavata, World Environmental Organization, Telangana Youth, Digiton, IT, and Lead India Foundation. And our exclusive media partners today is Mana TV, TV5, and also we have Sakshi TV and US1 TV broadcasting live today, Voice Today, TV5, Free Press, GK TV, Top Telugu, Janam Sakshi, Radio Aid, Navat Teja TV, News 9 TV, Yadadri TV, GNN, Telugu NRI Radio, BCN. They're all our media partners. So we have our technical team, Srinivas Guduru, Ram Maruri, and Srinivas Komatpalli, who is helping us on this show. Thank you very much. And we have our MCs, Samir Ipanapalli, a 10th grade student from Bakersfield, California, is with us today. And Keshav Jwalapuram, also a 10th grade student from Edison, New Jersey. Both of them will be doing the MC introductions of the speakers today. So again, I would like to welcome you all to this August gathering, which is a historic day today. And I would like to pay respect to Dr. APJ Abdul Kalam, who was the 11th President of India, who initiated the Lead India movement to transform youth into responsible citizens and engage them in developing the nation. And also he came up with this Pura concept through Vision 2020, providing urban amenities in rural areas. And he believed in providing electronic connectivity, health connectivity, education connectivity, grid independent energy connectivity. He felt that will lead into financial connectivity and develop the nation holistically. And 55% of the youth are below 25 years and 65% of them are below 35 years and 35% of them are below 15 years. So he focused on developing the rural India actually, and that's where our OBC communities significantly reside, and we would like to uplift them.
So just want to give you a quick run through of what is happening in the coronavirus today. So worldwide, we have total almost 20 million people are affected with corona and over 718,000 people dead. USA, over 5 million people, 162,000 people. In Brazil, you have 2.9 million, about close to 100,000 dead. In India, we are in number 3 rank. As of this morning, the numbers are over 2 million people affected with corona and 41,638 people dead. So this pandemic is spreading, and significant number of the people who are impacted with this are the underprivileged people, the migrant laborers, the workers, the policemen, the weavers, the masons, significantly affected, the potters. So we need to pay attention to this particular impact due to COVID. And but before that, we are all the people who are significantly affected, marginalized communities, not getting enough share of our proportionate population that we have in India. So again, COVID-19 pandemic has impacted the global economy, healthcare, education, energy, employment due to restricted mobility. This created an opportunity and an undeniable challenge, like reduced productivity, increased unemployment, and reduced liquidity in the marketplace. The pandemic has had devastating impact on the global rural economy in particular. It has affected the lives of the farmers, the weavers, the masons, and so many daily wage earners alike. In order to help revive the rural economy, it is important that we prioritize our public health, education, encourage the development of both small and medium scale businesses, connect the newly unemployed with the talent-seeking industries, and eventually restore the lives of all who are affected severely by the COVID-19 pandemic. So today is the very historic day. The Prime Minister, Shri VP Singh, implemented the 27% reservation to OBCs in the government jobs based on Mandal Commission recommendations. He said that this is the dream of Dr. B.R. Ambedkar, Dr. Ram Manohar Lohia, and Thandai Periyar Ramaswamy. In a recent meeting, OBC Parliament panel and Ministry of Social Justice and Empowerment, they wanted to bring the OBCs count back on the table to conduct in the upcoming caste-wise data in Census 2021, just like SCs and STs. And OBC quota, raise creamy layer ceiling, don't count salary, farm income. That's what the panel is looking into. There are so many other injustices being done to our OBC community. Again, looking at the Indian Constitution, India is a sovereign socialist, secular democratic republic to secure for all its citizens social, economic, and political justice, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation. In reality, justice is not served to the underprivileged people in India. Democracy supposed to be by the people, of the people, and for the people. And we are far from achieving that for the 52% of the OBCs in India. To put an end to this social injustice, social reformers like Sant Ravidas, Jyoti Rao Phule, Savitri Bhai Phule, Sahu Maharaj, Sri Narayana Guru, Dr. Baba Saheb Ambedkar, Punjab Rao Deshmukh, Periyar E.V. Ramaswamy, Baba Amte. So many people dedicated their lives to educate and enlighten the backward classes for securing the social justice. So union government must increase the budget according to the population of the BCs. Currently, central government is giving mere 1,200 crores to the population of over 50% of the entire country. It comes to approximately 20 rupees per person. The PG scholarships for 6 lakh OBC, government gives merely 1,000 scholarships to NCBC after 25 years. Reservation for economically backward section, no creamy layer for BCs. OBCs are the backbone of Indian economy, and most of the mediums and small scale industries are run by OBCs. The NCBC
members must be from OBC community. NCBC should be able to participate overall development of the community, increase in number of residential schools for the MBC and OPC students. Center must set up BC ministry and allocate in the budget. The current social welfare budget is hardly 900 crores, which comes to 11 rupees per person. So this budget should be increased. Political power is the master key for development of all the sections. Conferring the Bharat Ratna for Mahatma Jyotirao Phule and Savitri Phule. These are some of the basic things that we are talking about, but we have eminent speakers today who will go into the deep of this subject, the social, economic, and political empowerment of the 52% of the OBC community in India. So if you look at the media today, they're talking in general about 77% times CNN is talking about the caste related matter. And the India today is talking about 53% of the time about the caste related, and hardly talking about OBCs about 10% of the time. So this is some of the media statistics. I don't want to go into the details, but media is talking and we're all talking, but nothing is happening because the power is centered with close to 10% of the Indian population, and they are ruling the 90% of the people. It's time for us to wake up and get involved in the political process, get political empowerment that will lead into economic empowerment, and automatically the social justice will come into play. And education is the core essence of this. And we have eminent speaker, Dr. R.S. Praveen Kumar today to share about how do we educate our people. And getting into administration is the important fact. Our IAS, IPS officers should be in the administration so that they can help us to see what is happening and what are the benefits that we have already through Constitution of India, and what benefits we deserve and how do we achieve them. And we have Sri Parikapandla Narahari, IAS Commissioner Secretary from Madhya Pradesh, and we have our OBC Mahasangh President, Dr. Baban Rao Taiwade. He's also going to give the inaugural address today. Then we have Justice Ishwaraya Ji, who is the Chairman, Higher Education Judicial Commission of AP, and also the former Chairman of the NCBC, and he is the President of All India Backward Federation. He is going to provide us the insight into what is the constitutional rights we have as OBCs, and how do we secure them, and how do we grow and face the challenges that we are having. And we have Honorable Vijay Vadetwar. He is the Minister for OBC, Bahujan Welfare, Maharashtra government. And we look forward to having the similar ministry in the central government as well. Thank you for joining us today, sir. And we have a big supporter, Honorable Tejasvi Yadavji, former Deputy Chief Minister of Bihar. He is going to provide his insights into how do we uplift the marginalized and OBC communities. And to start with, we will have Honorable Nana Patole, Speaker, Legislative Assembly, Maharashtra. So I would like to welcome you all again. So we will continue the discussion, and we will have some interaction with the speakers as well. Each speaker will get approximately 15 minutes of time, and there may be a few minutes of interaction if needed with each speaker to highlight some of the topics they mentioned. And I'll be hosting this session today. So we will get started with this. MCs, please introduce the next speaker. Honorable Dr. Babanrao Tewade is the president of RASHTRIYA OBC MAHASANGH, as well as the president, chairman, and a member of various academic boards, councils, and is the management counselor of RTM Nagpur University. He is the general secretary for the Maharashtra Pradesh Congress Committee and president of the Maharashtra Commerce Teachers Associations since 2006. He has 40 years of experience in dynamic cooperative political, social, and cultural terrains. He advocates for the upliftment of the poor, marginalized, and exploited. He has had many awards and honors, such as the Best Teacher Award given to him by the government of Maharashtra, the Shiv Chhatrapati Award, and the Krushi Ratna, Dr. Panjabrao Deshmukh Memorial Award. We now welcome Honorable Dr. Babanrao Tewade to deliver his keynote.
तो आप सभी लोगों को मेरा जय ओबीसी, जय ओबीसी, जय ओबीसी। सबसे पहले मैं हमारे ओबीसी समाज के जो पिलर्स है, आधार स्तंभ है और जिनके विचारों से प्रेरणा लेकर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ कार्यरत है, ऐसे तथागत गौतम बुद्ध, महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू महाराज, सावित्रीबाई फुले, शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख, पेरियार स्वामी, महाजिजाऊ, अहिल्याबाई होळकर, फतिमा बेग, संत गाडगे बाबा, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, इन सभी लोगों को मैं विनम्र अभिवादन करता हूं। उसी तरह से बीपी मंडल जी, जिन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी, जिन्होंने मंडल कमीशन की सिफारिश एक्सेप्ट की थी, वो माजी पंतप्रधान वीपी सिंह साहब, जिन्होंने मंडल आयोग लागू करने के लिए लड़ाई लड़ी, वो माननीय काशीराम जी, इन सभी संत और महानुभावों को मैं विनम्र अभिवादन करता हूं। आज के राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के 5वें लायू महाधिवेशन के उद्घाटक माननीय नामदार नानाभाऊ पटोले जी, अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा, तथा प्रमुख मुख्य अतिथि माननीय तेजस्वी यादव साहब, माजी मुख्यमंत्री बिहार राज्य माननीय नामदार विजय वडेट्टीवार जी, मंत्री ओबीसी बहुजन कल्याण विभाग महाराष्ट्र राज्य, हमारे मार्गदर्शक जस्टिस ऐश्वर्या जी, अध्यक्ष उच्च शिक्षा आयोग आंध्र प्रदेश, अभी अभी जिन्होंने इंट्रोडक्शन दिया वो डॉक्टर हरी पन्नापल्ली जी जो यूएसए से है, श्री पी नरहरि जी आईएएस आयुक्त एवं सचिव मध्य प्रदेश, डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार जी आईपीएस आंध्र प्रदेश, आप सबका राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस लाइव अधिवेशन में जो लोग सहभागी हुए हैं उन सभी भाई बहन तथा जो ओबीसी समुदाय के लोग या और बाकी भी लोग ये लाइव अधिवेशन देख रहे हैं, उन सभी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं। मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस महा अधिवेशन में जो अभी यहाँ से पार्टिसिपेट हो रहे, सहभागी हो रहे, हमारे सम्माननीय डॉक्टर ऐश्वर्या सर, आज के उद्घाटक आदरणीय नानाभाऊ पटोले जी, विजय भाऊ वडेट्टीवार जी, हरि पन्नापल्ली जी, ये सभी लोग राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के स्थापना दिन से हमारे साथ है, हमारे मार्गदर्शक है और हर जगह हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं। और अन्य मेहमान को राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का कार्य की जानकारी देना ये मैं मेरा कर्तव्य समझता हूं कि जो लोग नए देख रहे हैं और रजिस्टर हुए उन्हें भी, और आज के जो मुख्य अतिथि है उन लोगों को भी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की जानकारी देना मेरा कर्तव्य है। तो ये हमारा जो राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ है ये पूरे देश में ओबीसी समाज के लिए कार्यरत सभी संगठनों का एक महासंघ है। इसके माध्यम से हम लोग देश के ओबीसी समाज की समस्याएं एवं प्रश्न, महाधिवेशन, धरना कार्यक्रम, मोर्चा, चर्चा सत्र, सेमिनार, इन कार्यक्रमों के माध्यम से चर्चा करते हैं और राज्य एवं केंद्र सरकार के सामने रखकर उन्हें सुलझाने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का पहला अधिवेशन 2016 में नागपुर में हुआ, दूसरा अधिवेशन 17 में दिल्ली में हुआ, तीसरा अधिवेशन 18 में मुंबई हुआ, चौथा अधिवेशन पिछले साल 19 में हैदराबाद में हुआ और अभी ये आज का लाइव 5वां अधिवेशन हम लोग करने जा रहे हैं। एक्चुअली इस साल का 5वां अधिवेशन पुणे में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के वजह से हम लोग वो नहीं कर पाए, इसलिए लाइव हो रहा है। सर, भारत के सारे ओबीसी संगठनों और राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ की
प्रयास से पिछले 5 सालों में देश का ओबीसी समाज जागरूक हो चुका है, पूरे विश्व का ओबीसी समाज जागरूक हुआ है। अभी अभी डॉक्टर हरियप्पन पल्ले जी ने जो इंट्रोडक्शन किया और ओबीसी के बारे में जो इतनी इंफॉर्मेशन दी, शायद हरि साहब हमारे देश का भी ओबीसी इतना अच्छा ओबीसी के बारे में नहीं बोल सकता, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन आपने दिया, आपको बधाई सारे ओबीसी समाज की। तो हम लोग समाज को जागरूक कर रहे हैं और हो चुका है, इसलिए जो आज का पिछले कुछ दिनों में मिली है हमें सफलता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारा ओबीसी जो इकट्ठा हुआ देश का, उसके कारण अभी दो बार क्रीमी का लिमिट 4.5 से 6 से 8 लाख रुपए हुआ। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को डॉक्टर ऐश्वर्या साहब यहाँ पर है, जस्टिस ऐश्वर्या साहब जी, उनके मेहनत से हमारे सारे ओबीसी के मानने से उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया है, ये हुआ। महाराष्ट्र में भी कुछ सफलताएं हमको मिली कि दोनों नॉन क्रिमिनल के लिमिट 4.5 से 6 से 8। सबसे बड़ा यानी महाराष्ट्र में ओबीसी मंत्रालय सेटअप हो गया है, उसके मंत्री जी आज हमें मार्गदर्शन करने वाले हैं। महाराष्ट्र राज्य में पहली से 10वीं के छात्रों के लिए स्कॉलरशिप चालू हुई, विदेश में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने जाने वाले लोगों को स्कॉलरशिप स्टार्ट की। स्पर्धा परीक्षा के लिए अभी स्वतंत्र संस्था महाज्योति सेटअप हो गई, अभी चालू हो जाएगी। उसके बाद में पूरे महाराष्ट्र में बच्चों के लिए हॉस्टल इस साल से चालू हो जाएंगे, शुरुआत सैंक्शन हो गया है। ये सभी उपलब्धियां सारे ओबीसी की संगठनाएं और सभी लोग इकट्ठा आने से जो मिल रही है। हमारे नाना पटोले जी साहब जब 17 में हमारा दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, उसमें हमारे होस्ट थे और उस वक्त उन्होंने जो लड़ाई तत्कालीन प्रधानमंत्री साहब से की और जो बड़ी छाती उन्होंने दिखाई कि सांसदशिप का राजीनामा दे दिया, लेकिन ओबीसी के साथ एक कंधा लेकर रहे और आज भी है, ये हमारे सारे ओबीसी समाज के लिए बड़े गर्व की बात है। लेकिन जो ओबीसी समाज की इतनी समस्याएं है, अभी डॉक्टर हरि साहब ने बताया है, केंद्र में है, राज्य की है, तो थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा कि ये समस्याओं की ओर हमारे सारे नेतागण विचार करेंगे और वो सुलझाने की कोशिश करेंगे। अभी अभी ऐश्वर्या साहब ने और डॉक्टर हरियप्पन पल्ली जी ने बताया कि सेंसस कास्ट बेस्ड सेंसस ऑफ ओबीसी कम्युनिटी पिछले 1931 के बाद अभी तक इतने सेंसस हुए 7, लेकिन ओबीसी का नहीं हो रहा। लास्ट भी 2 साल पहले तब के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने डिक्लेयर किया था कि हम करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट नहीं कर रही है। तो आपके माध्यम से मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 2021 में होने वाले सेंसस में ओबीसी की कास्ट बेस्ड गणना होनी चाहिए। बड़ी खुशी की बात है कि पार्लियामेंट्री ओबीसी वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष खासदार गणेश सिंह जी, उनके सारे मेंबर लोगों ने अभी अभी रिकमेंडेशन दिया गवर्नमेंट को कि इनका कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। सोशल वेलफेयर मिनिस्टर ने भी रिकमेंडेशन दिया है होम मिनिस्ट्री को और कमिश्नर सेंसस को कि आने वाले 21 में करना चाहिए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जब तक नहीं होता तब तक हम ओबीसी लोग शांत नहीं बैठेंगे। तो आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से ये विनंती करता हूं कि आने वाले 2021 के सेंसस में कास्ट बेस्ड सेंसस ओबीसी का होना चाहिए। अभी अभी ऐश्वर्या सर ने बताया कि ऑल इंडिया मेडिकल एडमिशन में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन लागू नहीं हो रहा है। हम लोग झगड़ रहे हैं, मुझे मालूम है कि नहीं। 2017 में हम लोग जब गए तो नाना पटोले साहब हमको खुद लोकसभा में वहां पर लेके घूमे थे, मिनिस्टर सेक्रेटरी को सबको रिक्वेस्ट किया था, लेकिन उसका चालू हो गया, लेकिन अभी तक नहीं मिल रहा है। मैंने कोर्ट में केस डाला, ऐश्वर्या सर ने कि अभी सुप्रीम कोर्ट में केस है, लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट का कोई स्टे नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट क्यों नहीं लागू करती, ये प्रमुख बात है। अगर स्टे होता तो हम मान सकते थे। किसी एक ने केस डाला और उसका रीजन देके हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग हम सारे ओबीसी को चूतिया बना रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। मुझे खुशी की बात है कि अभी फिर से पार्लियामेंट्री बोर्ड ने रिकमेंड किया है कि इनको एडमिशन देना चाहिए। एनसीबीसी अभी रुकी हुई है। ये सारे केस में गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो 27% रिजर्वेशन यूजी और पीजी एडमिशन में शुरू करना चाहिए। अभी अभी ऐश्वर्या साहब ने उल्लेख किया कि बीपी शर्मा कमेटी का जो नॉन क्रिमिनल के बारे में रिपोर्ट आया है, इतना भयानक रिपोर्ट है वो अगर लागू हो गया तो इस देश के एक भी ओबीसी को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इतना बेकार है। और इसलिए ये रिपोर्ट ही पूरी रिजेक्ट होना चाहिए।
1993 के जो रिकमेंडेशन है उसके तहत जो अभी नॉन क्रिमिनल का है वो चालू रहना चाहिए, और लिमिट जो है वो अभी 20 लाख की लिमिट गवर्नमेंट ने करना चाहिए। 7 पे लागू हो गया है, सब कुछ हो गया है। आज 8 लाख रुपए का इनकम में किसका नहीं होता है, और उसके 8 लाख के ऊपर थोड़ा भी गया तो उसके बच्चों को बेनिफिट नहीं मिलता। तो उसकी लिमिट 20 लाख करना चाहिए, लेकिन 20 लाख करने से भी हमारा सेटिस्फैक्शन नहीं होना। हम तो कहते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हुई कंडीशन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको भी रिजेक्ट कर देना चाहिए, और सारे ओबीसी के लोगों को इसका बेनिफिट सरकार ने देना चाहिए। ये हमारी ओबीसी की डिमांड है, जिसके ऊपर आज डिस्कशन होना चाहिए। अभी अभी डॉक्टर हरिपन्ना साहब ने बोला कि इतना बड़ा देश, 52% पॉपुलेशन, आज तक ओबीसी लोगों के लिए खुद सेपरेट मिनिस्ट्री नहीं है, तो वहां पर सेपरेट मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोलना चाहिए। ऐश्वर्या साहब ने अभी अभी बताया कि 27% रिजर्वेशन होने के बाद में ओनली 13 to 14% वैकेंसीज आर फिल्ड अप ड्यूरिंग द लास्ट 27 ईयर्स। 93 से चालू हुआ, 2020 में हम लोग बात कर रहे हैं, और सिर्फ 13 या 14% जगह भरी। व्हाई नॉट 27% ड्यूरिंग द लास्ट 25 ईयर्स? सो इट इज अवर रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट टू सेपरेट ड्राइव आप करो, और 27% जगह पूरी की पूरी ओबीसी की पहले फिलअप करो, बाद में बाकी की बात करो। ये सारी भरनी चाहिए। वो भी नॉन क्रिमिनल लिमिट लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करके हटा देना चाहिए। जुडिशियरी में हमें रिजर्वेशन नहीं, नॉट फ्रॉम तहसील लेवल टू सुप्रीम कोर्ट। ऐश्वर्या साहब यहाँ पे बैठे, उन्हें सारा मालूम है, तो ये भी वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। मंडल कमीशन, नचिपन कमीशन, स्वामीनाथन कमीशन के सारे रिपोर्ट के जो रिकमेंडेशन है वो लागू करना चाहिए। हमारे फार्मर्स है, फार्मर लेबर्स है, 60 साल के बाद बूढ़े हो जाते, बेचारों के खाने की सोच नहीं, इन लोगों को पेंशन लागू करना चाहिए। महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न अभी भी डॉक्टर हरि साहब ने बोला कि वो चालू होना चाहिए। देश के सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तालुका लेवल में ओबीसी बच्चों के लिए हॉस्टल सुविधाएं चालू करना चाहिए। प्रमोशन में हमें अभी भी रिजर्वेशन नहीं है, वो रिजर्वेशन लागू करनी चाहिए। विधानसभा, लोकसभा में हमें रिजर्वेशन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी ओबीसी के लिए होनी चाहिए। महात्मा ज्योतिराव फुले का जो लिटरेचर है आज 400-400, 500-500, 1000 रुपए में मार्केट में अवेलेबल। हमारी डिमांड है कि वो सिर्फ 10 रुपए में गवर्नमेंट ने हमें अवेलेबल करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, क्योंकि अभी सारे गवर्नमेंट की एजेंसी सेक्टर्स बंद हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशन बंद हो रहे हैं, प्राइवेट हो रहे हैं, तो वहां पर रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हमारी डिमांड है, और ये डिमांड के लिए हम सारे देश के ओबीसी संघर्ष कर रहे हैं। तो मेरे आपके माध्यम से सरकार से विनंती है कि ये सारी डिमांड की ओर अभी गवर्नमेंट ने ध्यान देकर ये फुलफिल होनी चाहिए। सो फार एज और महाराष्ट्र स्टेट इज कंसर्न, हमारे महाराष्ट्र के आज मंत्री यहाँ पर है, हमारे नाना भाऊ अध्यक्ष है विधानसभा के। आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो ओबीसी मंत्रालय, उसको सफिशिएंट फंड नहीं, वो सफिशिएंट फंड पॉपुलेशन के रेशियो में हमें मिलना चाहिए। महाज्योति का जीआर तो निकल गया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, तो जल्दी से जल्दी महाज्योति का इम्प्लीमेंटेशन हॉस्टल होना चाहिए। हॉस्टल सैंक्शन किए, लेकिन अभी बिल्डिंग बनने के लिए 5 साल 10 साल लगेंगे, तो रेंटेड बिल्डिंग में हमारे ओबीसी बच्चों के लिए हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 2 हॉस्टल, एक बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शुरू करना चाहिए। हमारे यहाँ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, यवतमाल, नंदुरबार, धुले, यहाँ का जो ओबीसी का रिजर्वेशन कम किया है, ये रिजर्वेशन जल्दी से जल्दी 27% लागू करना चाहिए, या वो 19% जो भी है। हमें ये समझ में नहीं आता कि अभी केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन लागू किया, तो 50% का लिमिट 60% पे चले गए। हमारे महाराष्ट्र में मराठा लोगों को इम्प्लीमेंट, तो हमारे यहाँ 75% रिजर्वेशन होगा। फिर ये ओबीसी का रिजर्वेशन कम करने का मतलब क्या? जब 50% का सीलिंग ही नहीं रहा, तो ओबीसी को सारे डिस्ट्रिक्ट में 19 या 27% रिजर्वेशन होना चाहिए। सारे कोर्सेज को 100% स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ने लागू करनी चाहिए। हमारे ओबीसी बच्चों के लिए वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी हर तालुका, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में चालू होना चाहिए। हमारा आर्थिक विकास महामंडल है, उसको सारा फंड अच्छे तरह से देकर ओबीसी बच्चों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये गवर्नमेंट का काम होना चाहिए। ओबीसी मंत्रालय के ऑफिस सारे डिस्ट्रिक्ट में चालू होने चाहिए। अभी 4 साल हो गए लेकिन नहीं हुए हैं। और एक
इम्पोर्टेंट ऐसा है कि हमारे यहाँ आप सभी स्टेट में जो अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, इसको रिप्रेजेंट करने वाला एक लोकसभा यूनिवर्सिटी, लोक भाषा यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने फॉर्म करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सारे ओबीसी कम्युनिटी के ओर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं आप लोगों के माध्यम से फिर एक बार खासदार गणेश सिंह जी, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी फॉर वेलफेयर ऑफ ओबीसी के है, और उनकी सारी टीम का इस ओबीसी समुदाय की सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए उनका ओबीसी समाज की ओर से धन्यवाद अदा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे लोग, यानी अभी गणेश सिंह साहब ने जो दो बड़े निर्णय लिया कि सारे खासदारों को उन्होंने पत्र लिखा कि आप इसका विरोध करो, बीपी शर्मा कमेटी का विरोध करो, सेंसस का सपोर्ट करो, बाकी सब गोष्ठी के लिए वो पूरा आगे आ रहे हैं। उसी तरह से मैं इस देश के सारे एमपीज और एमएलए को रिक्वेस्ट करूंगा इस मुद्दों के माध्यम से कि सारे लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखना चाहिए कि ये जो बातें हो रही है कि ओबीसी की सेंसस, कास्ट में सेंसस होना चाहिए, ओबीसी विद्यार्थियों को ऑल इंडिया यूजी पीजी में 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, बीपी शर्मा कमेटी का रिपोर्ट खारिज होना चाहिए, रद्द किया जाए, नॉन क्रिमिलियर की लिमिट 20 लाख करो या तो फिर वो हटा दो और सेंट्रल में ओबीसी मंत्रालय स्टार्ट करो। ऐसा रिकमेंडेशन हर एमएलए और हर एमपी ने ओबीसी कम्युनिटी के लिए रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को करे, ऐसा मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं। और आज जो लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, उन सभी लोगों को मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और आज यहाँ पर एक अच्छी चर्चा होगी जो ओबीसी समाज के लिए बेनिफिशियल रहेंगी। लास्ट में मैं ये कहूँगा कि इस ओबीसी कम्युनिटी में हिंदू समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, जैन समाज के लोग हैं, सिख समाज के लोग हैं, क्रिश्चियन समाज के लोग, और सारे लोग मिलके हम 52% है। तो हम सारे ओबीसी भाई ओबीसी करके एक मिलके हाथ से हाथ मिला के जब काम करेंगे और जय ओबीसी का नारा बुलंद करेंगे, तब सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके ऊपर प्रेशर आएगा और हमारी मांगे पूरी होगी। आज मुझे खुशी है कि आज पूरे देश का ओबीसी जागरूक हो चुका है, दिल्ली से लेके पूरे स्टेट तक। आज हमारे एआईओबीसी के लोग हैं, हमारे करुणानिधि जी है, फर्नांडिस साहब है, पार्थसारथी साहब है, हमारे हनुमंत राव जी है, उनकी सारी टीम, हमारे प्रदीप डोबले जी महाराष्ट्र के हैं, हमारे आंध्र से श्रीनिवास गौड़ जी है, दिल्ली में हम जाए तो हंसराज जी है, प्रवीण कुमार जी है, अवधेश कुमार जी है, जहाँ कौन से स्टेट के लोगों के हम नाम बताएं, ये सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। और आपको सेंसस के बारे में बता देता हूँ कि ये सेंसस की शुरुआत आज के जो उद्घाटक है माननीय नानाभाऊ पटोले, यहाँ से स्टार्ट हुआ कि महाराष्ट्र विधानसभा में उन्होंने खुद रिजोल्यूशन स्पीकर होके मूव किया और पास किया। उनका देख के बिहार ने किया, उड़ीसा ने किया और राजस्थान ने किया। और यही है कि आज पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर वेलफेयर ऑफ ओबीसी, इनको ये डिसीजन लेना पड़ा, सोशल मिनिस्ट्री जस्टिस को रिकमेंडेशन करना पड़ा कि आने वाले सेंसस में ये ओबीसी का कास्ट में सेंसस होना चाहिए। मैं नाना भाऊ को बधाई देता हूँ। और नाना भाऊ सर के लोग, विजय वडेट्टीवार सर के लोग, गणेश सिंह सर के लोग अगर हमें मिले ओबीसी कम्युनिटी को मार्गदर्शक, तो ओबीसी कम्युनिटी के जितने भी समस्याएं हैं, प्रश्न है, वो जल्द से जल्द सॉल्व होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। फिर एक बार आज के इस समारोह में सहभागी होने वाले सभी मान्यवरों का मैं स्वागत करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और स्पेशली थैंक्स टू डॉक्टर हरि येपन्नापल्ली जी who take the lead to host this Mahadhivesan from USA, America. Means the foreign peoples of OBC, they are also come together and fight for the right for OBC. So once again, I congratulate and thanks to Dr. Hri Yeppannapalli ji also, and all guests, all viewers and all participants. Thank you. Jai OBC, Jai OBC, Jai OBC. Thank you, Babanji. It's wonderful to hear a lot of data around what the OBC community's injustice is being, and it marks about 27 years since the 27% of the OBC reservation was supposed to be in effect, but as of now, it is not truly implemented.
and we're merely getting 14 to 15% of that particular 27% share. And I have more data to share as we go along, but let's have the next speaker being introduced. MCs, please introduce the next speaker, please. Our next speaker, Honorable Nana Patole, is the Speaker of the Legislative Constituency Assembly in the Government of Maharashtra and a member of the Sanghadi Zilla Parishad in 1994, Director of the Bandara District Bank in 1995, and a member of the Vidarbha Statutory Board in 2004. He has been elected as a legislator twice, and Honorable Rahul Gandhi nominated him as President of Kisan Congress. He won the Sakoli Legislative Assembly election and is a militant voice of resistance for the upliftment of masses. We now welcome Honorable Nana Patole to deliver his speech. जय ओबीसी। सबसे पहले आपको मैं आज के मंडल दिन की शुभकामना देना चाहूंगा और मुझे बहुत खुशी है कि बड़े भाई जिन्हें राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के ओर से आज ये मंडल दिन की उपलक्ष्य में हमने इंटरनेशनल लेवल पे ये 5वां अधिवेशन हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। इसलिए मैं राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई डॉक्टर भवन तायवाड़े और उनके सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। और यहाँ पर हमारे जिन्हें जस्टिस की कुर्सी में बैठकर भी जिन्हें हमारे ओबीसी लोगों को न्याय देने की बात हमेशा की, जो राष्ट्रीय ओबीसी जस्टिस के जो जिनके पास था वो हमारे साथी और हमारे बड़े भाई जस्टिस ईश्वराय जी, हमारे हरि इप्पन लिया जी, तेजस्वी यादव, हमारे राज्य के मंत्री हमारे भाई विजय वडेट्टीवार, पी नरसिंह हरि जी, डॉक्टर RS प्रवीण कुमार और हमारे सभी यहाँ पर पूरे देश और विदेश में से हमारे जो साथी यहाँ पे इकट्ठा हुए, मैं उनको सबको जय ओबीसी करता हूँ। और मूल इशू जो है कि आज ओबीसी जितनी भी जातियां हमारी पूरे देश में हैं, इनको सबको एक साथ आने का ये समय है जहां पे एकजुट हो, वहां पर जस्टिस मिलना बहुत तकलीफ का है, ऐसा मैं नहीं समझता। हमारे जातियों में, हमारी ओबीसी में बहुत सी जातियां, अलग अलग जातियों में हम लोग बिखरे हुए हैं और बबन राव जी ने जिस तरह से सबको इकट्ठा करने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं उनकी इस कोशिश को बहुत बहुत शुभकामना दूंगा। लेकिन महाराष्ट्र में लास्ट कुछ दिनों से मराठा को आरक्षण मिलने का एक आंदोलन शुरू हुआ और उसमें हमने देखा कि पूरे मराठा महाराष्ट्र के इकट्ठा होकर रास्ते पे आकर अपनी न्याय मांगने की शुरुआत की और महाराष्ट्र सरकार ने वैसा एक JR बनाया और वो आज सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज भी है। लेकिन उनसे सीखने की एक बात है कि उनकी तादाद कितनी है उसका अभी, क्योंकि हमारा सेंसस जो है जिसके बारे में सबने उल्लेख किया कि अभी के अधिवेशन में जब हमने मार्च के सेशन जो था महाराष्ट्र का बजट सेशन, जब केंद्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन निकाला जनगणना का, तब हमने वो निकलने के पहले ही हमने असेंबली में एक डिसीजन लिया। हमें पता था कि अपोजिशन की तरफ से और सरकार की तरफ से, क्योंकि आज तक ऐसा कोई मोमेंट हुई नहीं कि पूरा राज्य इस जनगणना के जाति यहाँ जनगणना का फेवर करने वाला, ऐसा कोई राज्य में हमने कभी देखा नहीं। लेकिन ओबीसी समाज का ऋण हमारे पे है, वो उस ऋण को किस तरह से हम लोग उसको जस्टिस दे सकते हैं, एक कोशिश हमने की
और सरकार या अपोजिशन की तरफ से कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं हुआ। हमने खुद ऐसा एक रूल लाया और उसको विधानसभा में पारित करवाया और उसका एक पूरे देश में पूरी विधानसभाओं में उसके बारे में चर्चा शुरू हो गई। और अब उसके बाद में जब जनगणना होना था तब अपने दुनिया में क्या हुआ आप सब लोगों को पता है कि कोरोना जैसे एक महामारी जो WHO भी आज भी WHO के बारे में भी हम लोग समझना चाहिए, क्योंकि WHO ने जब इसके बारे में कहा कि ये महामारी है और ये संसर्ग बीमारी है और 5 महीने के बाद WHO बताते हैं कि ये संसर्ग नहीं है, ये हवा में से भी ये बीमारी लग सकती है। WHO इस तरह का स्टेटमेंट बदलना और इस तरह का इस बीमारी का प्रचार और प्रसार कर कर लोगों को डराना, ये भी बात को हमको समझना चाहिए, क्योंकि वायरस इस बीमारी तो इंडिया के लिए क्या दुनिया के लिए भी कोई नई बात नहीं, लेकिन उसके बारे में आज चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जनगणना हुई होना चाहिए था, जिस तरह से हमने कहा था कि जाति निहार जनगणना अगर एक बार हो जाए तो पिछड़े जाति के लोग इस देश में कितने रहते, कौन से जाति में, उनका एजुकेशन क्या, उनको रहने के लिए व्यवस्था क्या, उनका बिजनेस क्या, ये सब अगर सेंसस हमारे देश के पास होता तो मुझे नहीं लगता कि जब ईश्वरराय जी भी इसमें जब जस्टिस देने बैठे थे, अगर सेंसस उस समय रहता तो ईश्वरराय जी ने उसी समय में इस देश के बैकवर्ड क्लास के लोगों को जस्टिस दिया रहता। लेकिन हमारे पास सेंसस ही 1931 का सेंसस लेके आज भी हम लोग चल रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि बबन राव तायवाड़े जी और उनके टीम ने जिस तरह से पूरे दुनिया को इस बात को जिस ढंग से रखा है, जो स्टडी रख कर रखा है, तो मुझे लगता है कि अब हमको ज्यादा समय इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि ओबीसी समाज को अब न्याय मिलने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी। अब हमारे इसमें हमें आरक्षण मिलता है, ये भी हमारे बैकवर्ड क्लास के कई लोगों को पता भी नहीं, ना एजुकेशन में पता है, नौकरी लगने के बाद भी उनको पता है कि हम लोगों को आर्टिकल 340 के आधार पर आरक्षण मिलता है। यह आज भी हमारे कई बैकवर्ड क्लास के लोगों को पता भी नहीं। ऐसी स्थिति आज हमारे समाज की है। लेकिन इस मोमेंट से पूरे हमारे ओबीसी समाज में एक मैसेज जाएगा और इस मैसेज से हमारा ओबीसी समाज जाग जाएगा और इस लड़ाई में शामिल होगा, ये मुझे विश्वास है। मैं आपको कुछ बातें रखना चाहूंगा कि आज अगर ओबीसी समाज की जाति निहार अगर जनगणना नहीं होती तो ये लड़ाई को और तेज करना पड़ेगा, क्योंकि अब कोरोना के इस धरती पर आज ये लगता है कि क्या हो रहा है सरकार में, क्या सरकार क्या कर रही है कि नहीं कर रही है, ये बात आज हमारे समझ में नहीं है। लेकिन सरकार से हमें पूछना पड़ेगा, केंद्र सरकार से हमें पूछना पड़ेगा कि आपको ये बात को पहले क्लियरेंस करना पड़ेगा कि 2021 में जो जनगणना हमारी डिक्लेयर होगी तब इसको जाति निहार जनगणना डिक्लेयर करोगे क्या, और करोगे नहीं तो वो आज से बताओ, उसकी तैयारी ओबीसी समाज आज से करेगा, जिसे 2021 की जनगणना में हमारी जाति निहार जनगणना का ही आंकड़ा इस देश के सेंसस में आना चाहिए। ये मांग हमको पहले करना पड़ेगा, नहीं तो यही इतने साल से 1931 से आज 2021 और अब 100 साल पूरा होने आ रहा है, और ऐसे समय में अगर हम लोग जाति निहार जनगणना का डिमांड को जोर नहीं पकड़ेंगे तो यही मोमेंट हमेशा चलते रहेंगे। सेकंड थिंग ऐसी है कि आज हमने देखते हैं कि यूजीसी में हो या पीजी में हो, मेडिकल में हो, आज हमारे बच्चों के एडमिशन में लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने हमारे को 19% मेडिकल में जगह रिजर्वेशन रखने को सरकार को कहा था। कोई भी राज्यों ने, केंद्र सरकार ने उस तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं बनाई। बबन राव तायवाड़े जी उस समय में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तब आए। नड्डा जो आज बीजेपी के अध्यक्ष है, तब हेल्थ मिनिस्टर थे सेंट्रल में, तब उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि हमें तो पता ही नहीं। जब हमने सेक्रेटरी को बुलाया, सेक्रेटरी से पूछा तो उन्होंने कहा कि पहला जो राउंड हुआ उसमें ओबीसी की जगह हमने भरी नहीं। फिर नड्डा ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं होगा, इसको आपको भरना पड़ेगा। आखिरी तक
ओबीसी के बच्चों को मेडिकल में कोटे के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बाद भी वो जगह नहीं भरी गई। और इस तरह से हमारे बच्चों को जो अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन, जो आज मेडिकल जैसे अच्छा एजुकेशन हमारे बच्चों को नहीं मिलता, ये भी हमारा दुर्भाग्य है और उसके लिए भी लड़ाई हमें तेज करना पड़ेगा। आज हम देखते हैं कि पीवी शर्मा जी का जो रिजल्ट था, जो नॉन क्रिमिनल का था, उसके बारे में भी एक समिति का अहवाल आया, लेकिन केंद्र सरकार आज भी उसको लेके नॉन क्रिमिनल रखकर हमारे क्योंकि किसान के पास अगर एक एकड़ जमीन हो या 2 एकड़ जमीन हो, उसका भी बेटा नॉन क्रिमिनल में नहीं बैठता। और ऐसे समय में 2 एकड़ का किसान अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। नॉन क्रिमिनल के आधार पर आपने देखा होगा कि 2016 में जो यूपीएससी में हमारे बच्चे पास हुए, जो आज कलेक्टर रहते, आज कोई जिले का वो नेतृत्व करते, 2016 के बच्चों को क्रिमिनल के आधार पर यूजीसी में यूपीएससी में पास होने वाले कलेक्टर, एसपी रैंक में हमारे बेटे गए थे। ऐसे बच्चों को क्रिमिनल के नाम से रोका गया और आखिरी तक उनको पास होने के बाद भी यूपीएससी के एग्जाम में आखिरी तक उनको आज भी क्रिमिनल के नाम से लटकाया रखा गया है। उनका भविष्य खराब करने का काम, ओबीसी समाज के नेतृत्व को खत्म करने का काम केंद्र सरकार ने सिस्टमैटिक किया। वो भी हम लोगों को बात हमारे लोगों के सामने रखना पड़ेगा, जिसे आज यूपीएससी जैसे एक कठिन परीक्षा को जिस तरह से हमारे बच्चे अपनी मेहनत से उस परीक्षा में पास होने के बाद, एग्जाम का फॉर्म ओपन में भरने के बाद तो भी वो क्रिमिनल की अट लगाकर हमारे बच्चे को, हमारे समाज का भविष्य खराब करने की व्यवस्था बनाते हैं, इसको भी हमको नजरअंदाज नहीं कर सकते। और इसकी भी लड़ाई तायवाड़े साहब हमें खड़ी करना पड़ेगा। दूसरा महत्व का इशू है कि केंद्र सरकार में ओबीसी मंत्रालय होना चाहिए। जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, जब केंद्र सरकार ने जीएसटी लाया, नया आर्थिक धोरण जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो आर्थिक धोरण था बदलकर जीएसटी का धोरण केंद्र सरकार ने लाया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने लाया, तब हमने कहा कि हमारा हिस्सा कितना रहेगा। हम फार्मर है, हम किसान है, हमारा हिस्सा उसमें कितना रहेगा, क्योंकि नया आर्थिक धोरण जब आता है तब उसमें जिसकी तादाद ज्यादा हो तो उसका हिस्सा कितना रहेगा, ये पूछने का अधिकार, अगर मैं उस समाज से मैं नेतृत्व करता हूँ, उस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मेरे समाज का हिस्सा कितना है, उस सरकार को पूछने की ताकत भी हमारे पास रहना चाहिए। जब हमने नरेंद्र मोदी को इस सवाल को हमने किया तो नरेंद्र मोदी ने ये सवाल का विरोध किया और कहा कि ये ओबीसी मंत्रालय क्या, हम तो और कुछ मंत्रालय बंद करने वाले, कोई भी नया ओबीसी मंत्रालय नहीं खोलेंगे। हमने उस समय कहा कि हमारे बच्चों को 5 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिली और उससे बच्चों का शैक्षणिक नुकसान हो रहा है। तो मोदी जी ने उस समय भी कहा था कि ओबीसी के बच्चों को पढ़ के कुछ नहीं करने का है, उनको खेती करना पड़ेगा, इस तरह का जवाब दिया। और इसलिए हमने भी उनको उसी लेवल का जवाब दिया कि हम भी ओबीसी के लोग हैं, तुम्हारी कुर्सी के लिए यहाँ पे नहीं आए, हमारे लोगों की लड़ाई करने आए। और मैं एक सबक दिया उनको, समझाया। लेकिन आज भी हमारे समाज में धर्म के नाम से हमारे अधिकार की लड़ाई लड़ने की जो हिम्मत कम हुई है। मेरे समाज के लोगों को मैं इतना ही कहूंगा कि धर्म अपना तो चाहिए, लेकिन अधिकार को भूलने की काम आप लोग ना करें। धर्म के नाम से हमें गुमराह करने का काम जो किया जाता है उसमें हमने सजग रहना चाहिए। इसलिए हमारी नई जनरेशन के बच्चे जो सुन रहे होंगे, तो 2016 में यूपीएससी में जो बच्चे हमारे पास हुए थे, जो आज कोई जिले के कलेक्टर रहते, कई जिले में एसपी रहते, कई जिले में डीएफओ रहते, अच्छे पोस्ट पर रहते, ऐसे 250-350 बच्चे का इन लोगों ने नुकसान किया। आखिर ये हमारे में से ही थे, इसका भी समझ हम लोगों ने रखना चाहिए। मैं एक महत्व का इशू लास्ट टाइम केंद्र सरकार में पार्लियामेंट में था, तब भी कहा था कि जितने भी आर्थिक कमीशन जो होते हैं उसके लिए बहुत सारी आर्थिक व्यवस्था की जाती है। उस समाज के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके लिए अगर नौकरी नहीं लगती तो रोजगार के लिए वहां पे आर्थिक तरतूब की जाती है। लेकिन राज्य हो या केंद्र सरकार हो, ओबीसी के बच्चों के लिए ऐसे कोई भी कमीशन के अंदर ऐसा कोई भी आर्थिक तरतूब नहीं रखते जिससे हमारे बच्चा
जो पढ़ा लिखा रहता है उसके पास पैसा नहीं होता, ना नौकरी मिलती, ना रोजगार मिलता। और ऐसी स्थिति में वही हमारी अच्छी क्वालिटी जो पढ़ा लिखा मेहनत किया, उनके माँ बाप ने अपने मेहनत से उनको पढ़ाया, वो बच्चे भी वहां पर बर्बाद होते हैं। इसलिए हमारी लड़ाई जो होना चाहिए कि हमारे भी लोग रोजगार की तरफ जाने के लिए सरकार ने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने हमारी तादाद के आधार पर, हमारी जनसंख्या के आधार पर उस तरह की आर्थिक व्यवस्था करना चाहिए। ये भी मांग यह अधिवेशन के माध्यम से हमें तेज करना पड़ेगा। सेकंड थिंग ऐसा है कि मैंने जब भी कहा कि क्रिमिनल के बारे में, ये क्रिमिनल एक्चुअली घटना में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। जब मंडल आयोग आया था आज के दिन में, तो मंडल के बाद कमंडल आया और कमंडल के माध्यम से हम लोगों को गुमराह किया गया। और उस समय में सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग, ओबीसी के विरोध के लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम्हारी संख्या कितनी है, तो संख्या हमारे 1931 के आधार पर फिर अपना स्टेटस आज का क्या है वो हम नहीं बता सके, और इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये क्रिमिनल और ये सब लगाया। और उसी के आधार पर आज भी सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के आधार पर पूरे देश में क्रिमिनल का नाम, क्रिमिनल लगाकर हमारे ओबीसी समाज के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक विकास को रोका जा रहा है। हम लोगों की मांग होना चाहिए कि इसको स्क्रैप कर देना चाहिए, क्योंकि जब संविधान के आधार पर, जैसे जब आपने कहा हिम्मतपाला जी की हम लोगों की सरकार का जो इशू आपने किया, तो आखिरी लोगों की सरकार है, हम संविधान के आधार पर हम लोग सत्ता में गए हैं। और ऐसे समय में वही संविधान का अपमान करने का काम जब होता है, तो निश्चित रूप से उसका विरोध करने का काम हम सब लोगों ने करना चाहिए। क्रिमिनल संविधान में कहीं पे भी बाबा साहब अम्बेडकर ने उल्लेख नहीं किया। क्रिमिनल के बारे में भी हमने एक जोर से डिमांड करने की जरूरत है, क्रिमिनल को स्क्रैप करने की। और जैसे आर्टिकल 340, 341 और 42, जैसे 341 और 42 में कोई भी क्रिमिनल की अट नहीं है, वैसी हमारे 340 आर्टिकल के आधार पर भी क्रिमिनल का जो विषय लाके हम लोगों को रोका जा रहा है, क्रिमिनल को स्क्रैप करने का डिमांड हम सब लोगों को करना पड़ेगा। आज हम लोगों ने देखा कि ओबीसी की जो पोस्ट है, फिर हमारे न्याय व्यवस्था में हो, हमारे मंत्रालय में हो, कहीं पे भी हम लोगों का रिजर्वेशन उसमें रखा नहीं जाता। हम लोगों को जब हम लोग ओपन में उसमें फाइट कर जब नौकरी में लगते हैं, तो फिर कुछ वो जो लोग छुपे हुए लोग पीछे से कहते हैं कि भाई इसको ओपन में नहीं, इसको उसके कैटेगरी में डालना चाहिए। क्लियर पोस्ट उसमें डाली नहीं जाती, और जो ओपन में हमारे बच्चे जब पास होते हैं, हमारी लड़कियां पास होती है, तो उसको वो लोग पिछले दरवाजे से उसको ओबीसी कैटेगरी में डालने का काम करते हैं। हाल ही में एक मीटिंग हमने महाराष्ट्र सरकार के लिए, उसके सभी सेक्रेटरी को बुलाया गया था, मंत्री जी भी थे, हमारे वडेट्टीवार साहब भी थे, हमारे तायवाड़े साहब भी थे। और उसमें हमने उनको कहा कि अभी जो भी नौकरी महाराष्ट्र में निकलेंगी, उसमें ओबीसी का उसमें आरक्षण क्लियर उसमें आना चाहिए। हमारे जो हमारा महाराष्ट्र में 19% जो आरक्षण दिया जाता है, उसके आधार पर वो सभी जगह भरना चाहिए। ये मांग हम लोगों ने की है और सरकार को हमने आदेश दिया, राज्य सरकार को। और हमारे मंत्री जी वडेट्टीवार साहब ने कहा कि हम तुरंत उसको कैबिनेट में लेकर महाराष्ट्र में ओबीसी के आरक्षण के बारे में एक क्लियरिटी महाराष्ट्र के इसमें लाएंगे, जिसमें शाहू फुले अंबेडकर जो महाराष्ट्र का विचारधारा थी, वो पूरे देश को नहीं तो दुनिया को जो विचारधारा को एक्सेप्ट किया, वो महाराष्ट्र में अगर यही बहुजनों पे अन्याय होगा तो ये बात कतई मान्य नहीं होगी। और वडेट्टीवार जी ने उस तरह से मोमेंट वो ऑलरेडी उनके कैबिनेट में करने जा रहे हैं। ये महत्व का है कि मैंने शुरुआत में कहा कि हम लोगों को यूनाइटेड होना, क्योंकि हमारी जातियां तो बहुत है। जैसे हम लोग यहाँ महाराष्ट्र में कुणबी है, तो आंध्र में गए तो वो रेड्डी बन जाते हैं, उनका नाम जात
सब अलग अलग है, कोई अलग अलग जितनी भी जातियां हमारे ओबीसी समाज की, ये सब जातियों से बाहर रखकर हम लोगों ने अब यूनाइटेड होना, यही हमारे लिए अब सबसे बड़ा महत्व का काम है। सत्ता में भी हमारे लोग जाना चाहिए, नौकरी में भी हमारे लोग जाना चाहिए और हमारे लोगों को न्याय देना चाहिए, क्योंकि आज किसान का भी हालत, क्योंकि हमारा समाज ज्यादा से ज्यादा फार्मिंग करता है, खेती करता है, और हमारे समाज को, क्योंकि खेती में क्या हालत है, जो खेती में मेहनत करता है उसको कुछ नहीं, जो मुट्ठी भर लोग है उनके पास सबसे ज्यादा पैसा जाता है। और इसलिए एग्रीकल्चर के धोरण बनाने के लिए, फार्मिंग का धोरण बनाने के लिए भी हम लोगों को, अगर सत्ता में हमारे लोग ज्यादा आते हैं तो निश्चित रूप से एक नया विकल्प और नया संकल्प और नई दिशा हम लोग दे सकेंगे, क्योंकि तादाद हमारी ज्यादा है, जनसंख्या हमारी ज्यादा है, लेकिन हम लोग सत्ता में भागीदारी हमारी कम है, हमारी प्रशासकीय व्यवस्था में हमारी भागीदारी कम है। और इसलिए ये टक्का बढ़ाने के लिए हम लोगों को यूनाइटेड होना, हम लोगों को इकट्ठे होना, यही हमारी सबकी जवाबदारी है। ये पांचवा हमारा जो इंटरनेशनल अधिवेशन जो राष्ट्रीय ओबीसी के माध्यम से होने जा रहा है, मैं इस पहल का मैं बहुत स्वागत करता हूं। तायवाड़े जी ने, मुझे याद है कि पहला अधिवेशन नागपुर में किया, फिर और ऐसे करते करते आज हमारे ओबीसी और संगठन को आज पूरे दुनिया में ले जाने का काम हमारे बड़े भाई बबन राव तायवाड़े जी ने जो किया है और उनके पूरे टीम ने किया है, मैं वो पूरे टीम को, बबन राव तायवाड़े जी के साथ मैं उन पूरे टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मुझे विश्वास है कि इंटरनेशनल लेवल पर ये अधिवेशन होना, ये हमारे समाज के लिए, हमारे बहुजन समाज के लिए, हमारे ओबीसी समाज के लिए, ये हमारे सबके लिए गर्व की बात है। और ऐसा ये अधिवेशन आपने किया, इसलिए मैं आपको बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं इस इंटरनेशनल अधिवेशन का मैं विधिवत उद्घाटन हुआ ये जाहिर करता हूं और मेरे 2 शब्द पूरे करता हूं। धन्यवाद। Thank you, Nana ji, for inaugurating this international conference on other backward classes organized by RASHTRIYA MAHASANGH. So it's wonderful to hear you, and you have shared a lot of information, a lot of demands. Our immediate action item should be to unite all the 52% of the OBCs throughout the nation. That is the only way we could achieve our goals, to make sure that our constitutional rights are preserved and our socio-economic and educational healthcare related issues are addressed. So you have highlighted all of it, and I think we need to look forward to your leadership to bring the community together and unite to protect our interest at the national level. Ultimately, we should get into the political power as well. Even it takes a generation. Now, this is the time to plant the seeds and nurture them so that the future generations can benefit it. So MCs, please introduce the next speaker. Our next speaker is Honorable Justice Aishwarya, who practiced as a lawyer mainly in High Court and civil courts in Hyderabad. He has handled several civil, criminal, and constitutional matters, worked as a government pleader for 5 years from January 1990 to December 1994, and was standing counsel of APDDCL, Nalgonda District Cooperative Central Bank, and more. He was appointed as Additional Judge, High Court of Andhra Pradesh on May 17, 1999, and appointed to perform the duties of the office of the Chief Justice by the High Court of Andhra Pradesh. We now welcome Honorable Justice Aishwarya to deliver his speech. So brother, you need to unmute Aishwarya ji. Yeah, go ahead.
We are not able to hear you, brother. You need to unmute. Yes. Yes. The माननीय नाना पटोले जी आज की इनागरेटर and chief guest of this webinar, माननीय श्री तेजस्वी यादव जी, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर। मैंने भाई साहब से दिल्ली में एक संगठन में मिला और बहुत अच्छा लगा, और जैसा नाम है और भाई साहब भी वैसी है। वी होप जैसा नाना पटेल साहब, तेजस्वी यादव और स्टालिन जैसा लीडर्स अपने को मिले, अपने जो आशा करते हैं, जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल जस्टिस, ये दूर नहीं है, ये समझता हूं। और आज की जो राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ का प्रेसिडेंट बड़े भाई डॉक्टर बाबनराव थैवोडे और अपने ऑनरेबल मिनिस्टर विजय वाडोटे and my dear and dear brother Sri Hari Ippanapalli, the chairman AIBCF Advisory Council and the chairman Lead India Foundation USA, the Sri P. Narahari, IAS Commissioner and Secretary of the Madhya Pradesh, brother Dr. R.S. Praveen Kumar, IPS, Secretary Social and Tribal Welfare Residential Schools, Telangana, and sister the advocate Rekha Marathe. It gives me immense pleasure to participate in the international the 5th National Convention conducted by the OBC, RASHTRIYA OBC MAHASANGH in association of the All India Backward Class Federation and all the BC associations of the respective states to have this convention on the 7th subject, on the 7th day of the August. 7th day of the August significance I have already told. This is the day the Mandal Commission report was sought to be implemented by Sri V.P. Singh ji. Then we have been conducting this kind of the national convention. This is the 5th. And when it was conducted in Delhi, 5,000 or 6,000 people were gathered. And next time Maharashtra, more or less maybe 6,000 or 7,000. Next time Telangana, 10,000 people have attended. But today, I think more than 50,000 people are watching this. Therefore, I congratulate Babanrai Thaiwode and especially Hari Ippanapalli for facilitating this kind of the gigantic convention to hear all over the world, especially in the Bharat. Therefore, this is a unique. The COVID has brought into existence to come into technology and to connect us. And I will go to the subjects. First of all, I thank Nana Patole because when he was the member of the BJP party, then he was having some difference of opinion without thinking anything. Just he has resigned. And such a committed person we want. Then again, now he is the speaker. He being the speaker, he introduced the bill to pass a resolution to conduct the caste census of OBCs in the 2021 census. That is the guts he is having and commitment he is having, and every year I have been meeting for all these conventions. Then Bihar also then passed a resolution, Odisha passed a resolution to conduct the caste census. Sri Ashok Gehlot also written a letter to the Honorable Home Minister. And yesterday I have met the Chief Minister of Andhra Pradesh. He has also agreed to write a letter to the Home Ministry to demanding to conduct the caste census of 2021. And also he has agreed to write a letter to provide reservations in the PG
50% of the PG medical colleges of the national pool and 15% of the undergraduate medical seats in the national pool. आपको सबको पता है हर राष्ट्र अलग अलग रिजर्वेशंस अपने स्टेट में देता है. फॉर एग्जांपल जिस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और अंडर ग्रेजुएट मेडिकल दिन Tamil Nadu state gives 50% reservations for the OBCs. Andhra Pradesh state gives 29% reservations to the OBCs. फिर अपने नीट कंडक्ट करे बाद 50% of the seats are taken away by the government under the national pool to allot them on the merit basis. So the 50% of seats में OBCs को reservations नहीं दे रहा. उस वास्ते मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया और उसमें काउंटर भी फेवरेबल काउंटर किया, मगर अभी तक रिजर्वे अपने जजमेंट नहीं आया, क्योंकि अपने हिस्सा है, अपने जो हक है वो हक वो लोग खाली फैसिलिटेट टू अलॉट ऑल इंडिया बेसिस मेरिट कोटा एंड दे हैव टेकन अवे आवर एग्जिस्टिंग 50% रिजर्वेशंस. देन आपको सबको पता है SCs are provided their percentage of reservations, scheduled castes are provided. Haven't my case डाले बाद EWS also 10% reservations दे रहा. मुझे पता नहीं क्या पाप किया OBCs ने. OBCs में 50% of the PG medical college reservations नहीं दे रहा है भारत सरकार और 15% of the UG medical college. उस वास्ते मैं वहां का एक member of parliament Rajya Sabha Wilson ji of the Tamil Nadu state, ने भी एक केस दाखिल किया सुप्रीम कोर्ट में. Then Supreme Court directed him to then closed the case with the liberty to approach the Madras High Court. Madras High Court delivered an excellent judgment to appoint a committee and to restore the reservations either to the state governments who are enjoying. Therefore, I think that favorable committee will take a favorable decision insofar as the Madras state is concerned. मेरा अपील है हर एक स्टेट, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री भी लिखना चाहिए, वहां की भी जितना भी 19% है, 29 जितना भी परसेंट है वो पीजी मेडिकल कॉलेज और यूजी मेडिकल कॉलेज में अपने हिस्सा देना चाहिए. और मैं तेजस्वी भाई को भी मेरा विनती करता हूं, ये अपने पीजी मेडिकल सीट्स में अपने को जितना 3 साल से अपने को डिनाई कर रहा, इसके बारे में सब लोग और ये लिखना चाहिए. मैंने सुना सोनिया गांधी भी ये रिजर्वेशन देना बोल के एक लेटर लिखा और उसमें प्रेशर लाना चाहिए. और दूसरा, फर्स्ट इश्यू इज टू कंडक्ट द कास्ट सेंसस ऑफ द ओबीसी. इसके बारे में नाना पटेले साहब ने बहुत तस्वीर से बोला, क्योंकि क्यों अपने कास्ट सेंसस करना. शेड्यूल कास्ट को कास्ट सेंसस करते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स को करते हैं, वुमेन को करते हैं, मेल करते हैं, हिंदू मुस्लिम ईसाई क्रिश्चियंस करते हैं. मगर when the constitution provides reservations for the socially educationally backward classes under clause 15(5) to reserve the certain percentage of the seats in the education institutions, and under article 16(4) to provide reservations in the appointment to have the adequate representation in the post and services, and under article 243 D6 reservations are provided from 1992 to in the panchayats and the municipalities. अगर पंचायत municipalities को reservations करना, the social, economic, education, cultural, political reservations implement करना, and to include and exclude the social educationally backward classes without the data and without the particulars about their social, economic, cultural, political, employment, then wealth, how does anybody will then recognize who is the social educationally backward classes? क्योंकि वो लोग
करवाने का नियत साफ नहीं है। दी कास्ट सेंसस ऑफ कंडक्ट, जब ने शारदा यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी तो पार्लियामेंट में 2010 में था, पार्लियामेंट में डिमांड किया अपने को ओबीसी सेंसस करो बोल के, और देयर वाज कंसेंसस वर अराइव्ड इन द पार्लियामेंट स्टेटिंग दैट हम ओबीसी कास्ट सेंसस करते हैं बोल के। 2011 कास्ट सेंसस हैव बीन कंडक्टेड, 2011 कंडक्ट 200 करोड़ रुपए ईयरमार्क किया, कास्ट सेंसस कंडक्ट करा, मगर कास्ट सेंसस कंडक्ट करे बाद वो पब्लिश नहीं किया। क्यों पब्लिश नहीं किया? ये ओबीसी का हालत नहीं होना, मालूम नहीं होना चाहिए। बोली ओबीसी का कितना नौकरियां है, कितना वेल्थ है, कितना एकेडमिक है, कितना पॉलिटिकल शेयर है, कि एजुकेशन में एम्प्लॉयमेंट में कितना शेयर है, ये मालूम नहीं होना चाहिए। और मालूम होए तो बड़ा आंदोलन आ जाएगा और हलचल मच जाएगा। उस वास्ते भारत सरकार ने ई कास्ट कंडक्ट सेंसस नहीं करना चाहता है। और माय स्पेशल थैंक्स टू माननीय गणेश सिंह जी, द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ द ओबीसी। इन्हें बहुत अपने गट्स से 2 इश्यूज पर उन्हें रिकमेंडेशन किया, और मैंने जब नेशनल कमीशन पर बैकवर्ड क्लासेस का चेयरपर्सन था, कई अपने रिकमेंडेशंस ने किया। मैं वन रिकमेंडेशन इज टू कन्फर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑन द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, कि भी कोई भी एक्ट नहीं रह सकता, कुछ इम्प्लीमेंट कोई भी एक्ट कानून करे तो इम्प्लीमेंटेशन का प्रोविजन रहता, और 27% रिजर्वेशन दे के इम्प्लीमेंटेशन का कोई भी संस्था नहीं तो उसको कुछ फायदा नहीं है। वैसा मैं प्रधानमंत्री से भी मिला, उसको कन्विंस करे तो भले उन्हें दिया, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे के किसको बिठाया उसने, जो ला मालूम नहीं है। और हाईकोर्ट जज जब चेयरपर्सन रहता था, अब वह अनपढ़ अपने अननोन और नॉट कमिटेड पर्सन्स को बिठाया वो लोग। और ये अपने गणेश सिंह साहब, और मैं क्या वर्गीकरण के वास्ते में, क्रीमी लेयर के वास्ते में, और प्रोवाइड रिजर्वेशन इन द सेंट्रल स्कूल्स, केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय स्कूल्स में, सैनिक स्कूल्स में मैंने किया। और कई अपने प्राइवेट सेक्टर में भी ओबीसी को रिजर्वेशन होना चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग इज गोइंग प्राइवेट सेक्टर। और वो पूरे जो भी रिकमेंडेशन किया, और मुझे नहीं बोला इसको क्या पावर है रिकमेंडेशन करने का, उसको अपने खाली अपने ये तरकारियां भेज दो बोलते उन्हें मेडिसिन से भेज दे रहा बोल के एक ने कमेंट किया, मगर फिर भी मैं पीछे नहीं हटा, जो रिकमेंडेशन करना था करा। फिर बाद में गणेश सिंह साहब ने भी ये रिकमेंडेशन किया, क्रीमी लेयर लिबरलाइज करना, 27% फिलअप करे वैसा उसको लिबरलाइज करना, और कास्ट सेंसस भी करना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब से और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से अनलेस कंटेम्पोरेरीनेस डेटा रहे तो ओबीसी का कितना रिजर्वेशन होना चाहिए, कितना उसको सहूलतें होना चाहिए, कितना बजट होना चाहिए, उस वास्ते उसको सेपरेट मिनिस्ट्री होना, सेपरेट मिनिस्ट्री है तो कुछ ये अपने ये सुविधा है देखभाल कर सकते। ऐसा पार्लियामेंट्री कमिटी सॉवरेन पावर एक्सरसाइजेस करता, और उसके ऊपर एक बीडी शर्मा कमिटी को बिठाते। इट्स एन इंसल्ट टू द पार्लियामेंट्री कमिटी, इट्स एन इंसल्ट टू द सॉवरेन पावर ऑफ द पार्लियामेंट। उसका एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को पार्लियामेंट्री कमिटी के ऊपर बिठा लेके उसका खिलाफ में एक रिपोर्ट मंगा लेता सरकार ने, और वो रिपोर्ट मंगा लेके और एनसीबीसी से उसको कायम करने के वास्ते उसको दबाव में लाना चाहते हैं, उसका प्रभाव में लाना चाहता है। अभी वो पेंडिंग है। उस वास्ते मेरा सिंपल विनती है, हमारे को 27% दिया, 27% दे दो। अगर 100 में 50% रिजर्वेशन किया, जो एससी को जितना चाहिए उसमें इतना दो, एसटी को दो, बाकी का जितना भी 27% आप दे रहा, 27% आप कोई भी रूल लगाओ, कोई भी क्रीमी लेयर लगाओ, नौकरी मिलाओ, सैलरी मिलाओ, नहीं मिलाओ, कुछ भी करो, मगर हमारे 27% हमारे दे देना। उसमें एक सीट भी डी रिजर्व नहीं करना। सिंपल बात है, आप 27% देना, उसमें डी रिजर्व नहीं करना।
वो लोग क्या कर रहा है, एक हाथ से 27% दे रहा है, क्रीमी लेयर लगा के दूसरा। ये नहीं बोला सुप्रीम कोर्ट में, नहीं बोला, ये नहीं बोला अपने कमिटी ने बोला जो ऐसा ओनली कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट है, हाईकोर्ट जजेस है, मिनिस्टर्स है, गवर्नर्स है, और उसको कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट को क्रीमी लेयर में लाता और डायरेक्टली रिक्रूटेड ग्रुप ए और क्लास 1 ऑफिसर्स को उसमें सोशल स्टेटस रहता, खाली उसको ही निकालना, मगर उसके पीछे वालों का कोई भी सैलरी तनख्वाह नहीं मिलाना। मगर एक एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स है तो भी दोनों पेरेंट्स उसको IAS IPS में सेलेक्ट किए बाद भी वो लोगों को ना अपने अपॉइंट नहीं किया, क्रीमी लेयर में आता, आपको 6 लाख में आता, बाद में 8 लाख में आता बोल के एवरी ईयर अपने हिस्सा वो लोग ले रहा। ये बड़ा गंभीर बात है। उस वास्ते क्रीमी लेयर should be simplified, should be liberalized and see that कोई भी अपने प्रिंसिपल लगाओ, अपने 27% हमारे में दे दो, कोई भी डी रिजर्वेशन नहीं करना। और उसमें हर साल में ने अभी 9% से 11% से 11% से अभी 13% तक फिलअप हो रहा। इतने साल से अपने हिस्सा ले लिया, वो लोग अपने खींच लिया, ग्राफ कर लिया, अभी भी बैकलॉग फिलअप करना और साल में 27% अपने हिस्सा अपने को दे देना, ये डिमांड होना चाहिए। आप क्रीमी लेयर का हिस्सा में निकालो, पुलिस को नहीं निकालेंगे क्योंकि 9 बेंच जजमेंट है, मगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला 15 लाख करो, 20 लाख करो, 30 लाख रुपए नहीं करा। सुप्रीम को बोला 27% में दे, उसमें मोस्ट बैकवर्ड क्लास से ऊपर लाते हुए 27% भर दो, यही बोला, मगर उससे ज्यादा और कुछ नहीं बोला। और अपने जो अदर इश्यूज, द रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट इन द जुडिशरी एंड OBC फ्रॉम तहसील कोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, आज हमारे को नहीं मिल रहा। तेजस्वी भाई को तो बहुत पूरा पता है कौन रहता है यूपी में, पूरा शर्मा और अपने शाह और कोई भी सब लोग वही जज रहता, पूरा अपने 80% अपने लोग हैं। कौन सा कोर्ट में अपने न्याय मिलेगा? मुंसिफ कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक अपने को न्याय मिलेंगे नहीं, क्योंकि हमारे को गुनहगार बताते, अपने ऊपर अपने ये ले लेते। क्योंकि उस वास्ते हमारे को ये डिमांड होना चाहिए, ये डेमोक्रेसी में, ये अपने डेमोक्रेटिक कंट्री में, ये रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स एग्जीक्यूटिव में रहना, लेजिस्लेटर में रहना, जुडिशियरी में रहना और अपने भागीदार पॉलिटिकल में रहना, अपने भाग अपने हिस्सा अपने को होना चाहिए, तभी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते। नहीं तो when our representatives are not there in the ministry, central secretariat में एक OBC सेक्रेटरी नहीं है और कोई भी अपने को वहां देखने वाले नहीं है, क्योंकि उस वास्ते रिजर्वेशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड in all fields, in all branches, in all wings. That is also one demand. उस वास्ते ये these things are very, आपने नाना पटेल जब जैसे ने बोला, हम यही सब्र सीख लेना चाहिए, हम इकट्ठा होना चाहिए, हम सब एक जुड़ना चाहिए, जुड़ के फिर अपने वोट अपने को डालना, अपने वोट अपने को डालना। हम जितना है अपने को उतना हिस्सा होना चाहिए, फिर अपने शेयर होना चाहिए। ये कोई भी भीख मांगने से और पूछने से नहीं आएगा, मगर हम लेने से अपने हक अपन ले सकते हैं। यही इसमें एजुकेट करना, जो बैकवर्ड क्लासेस पीपल को कॉन्स्टिट्यूशन पता नहीं है, आर्टिकल 14 क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन द कास्ट रेस 15 क्या है, 15(4), 16(4) of human trafficking and prohibition of child labor, malnutrition, social economic, अपने जन्म सिद्ध कर है, अपने सदियों से अपने सोशल रिफॉर्म से जो लड़ा वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, पर कोई भी नहीं पढ़ता कॉन्स्टिट्यूशन, वकील लोग नहीं पढ़ता, जजेस नहीं पढ़ता, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ता। अगर पढ़े तो भी एजुकेट करना चाहिए, सेंसिटाइज करना चाहिए, उसको नस नस में
ये सोशल जस्टिस कॉन्सेप्ट घुसाना चाहिए, तब अपने जो वोट मांगने का, खरीदने का जरूरत नहीं रहता। फिर आपने सही भी अपन राज्य अपन देख सकते हैं। आपको सबको बहुत धन्यवाद। बाद में जो भी क्वेश्चन आंसर चाहिए मैं दूंगा। फिर आई विल बी वेटिंग फॉर टू लिसन नेक्स्ट अपने भाई तेजस्वी और अपने यादव साहब की भी मेरे ख्याल से है। थैंक यू ब्रदर्स। Yeah, thank you very much, Justice Ishwaraya ji. You have provided so much information and lot to digest. But as the president of AIBCF, I would like to request you to unite all the OBC community around the country and also overseas OBC brothers and sisters, so that until and unless we unite, we may have differences within a family. Also, we will have differences between brothers and sisters and father. But when time comes, we all get united. When somebody is trying to do some mudslinging on us, and we get united. And the same way, there's so much of injustice. I think it's time for all of us to get united. And a single point of agenda is to bring OBCs into power, socially, economically, educationally, and employment wise also. The due share of our community, we need to preserve, protect, and make sure that it reaches for the future generations also. Thank you very much. MCs, introduce the next speaker, please. Before we introduce the next speaker, I would like to recognize Dr. Haryapanapoli. Dr. Haryapanapoli is a financial services professional, an entrepreneur, and a philanthropist with a passion for healthcare, education, and the environment. His mission has been to transform youth into responsible citizens, to establish a peaceful society for harmonious living. And he has received a BTech in mechanical engineering from JNTU Hyderabad and a master's in computer sciences from New Jersey Institute of Technology, and completed an executive program in general management from Massachusetts Institute of Technology. He's an entrepreneur, keynote speaker, and investor in disruptive technology companies, and serves as chairman of the board for the CIC Group and Quibble Genomics Institute. He is a visionary, mentor, founder, and chairman of the Lead India and Liberty Foundation, advisor to the Alternate Development Organization in Norway, and founding board member of the Financial Policy Council. He serves on the boards of several for-profit and nonprofit organizations. Dr. Haryapanapoli has worked closely with the 11th President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, on the Lead India movement since 2008. He is the founding chairman of the Lead India Foundation. Lead India is a brainchild of Dr. Kalam's Vision 2020 and founded with a mission to provide affordable, quality healthcare, affordable, quality education, preserve and protect the planet for future generations, and develop spiritual families to establish peace and harmony in the society. Our next speaker, Honorable Tejasvi Yadav, is the current leader of the opposition in Bihar Legislative Assembly. Mr. Yadav was also appointed as the Deputy Chief Minister in 2015, in which he was in office until 2017. He began his career by aspiring to be a cricket star. He played in the Indian Premier League from 2008-2012, playing a total of 4 seasons with the team, Delhi Daredevils. Moving on from cricket, he entered a life of politics at a very young age and has become the youngest ever opposition leader in India. It is my honor and privilege to welcome the Honorable Tejasvi Yadav to deliver his keynote address on this global webinar. Thank you very much for the introduction. Unmute it. Yes. Thank you very much for the introduction. I hope everyone is keeping safe in this disastrous time of Corona. First of all, this is the 5th National Conventional RASHTRIYA OBC MAHASANGH. I'm thankful to the organizer that they had invited me and gave us time to speak on OBC issues. सबसे पहले आप सब लोगों को प्रणाम करते हैं, सभी लोगों को धन्यवाद करते हैं, ऑर्गेनाइजर्स जितने हैं, कि एक मौका मिला, हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला जहां आज अपनी बात जो है ओबीसी इश्यूज के बारे में हम लोग डिस्कस कर सके। रेगुलरली ये मीटिंग्स होते रहना चाहिए, किया जाना चाहिए। और देश में काफ़ी इश्यूज हैं
अभी मैं बैठ करके लगभग सभी मोटा मोटी जितने भी स्पीकर्स थे उनकी बात मैंने सुनी। नाना पटोले जी हों, जस्टिस ऐश्वर्या जी हों, और भी सभी ऑनरेबल गेस्ट्स जितने आए हैं, उन सबको भी अपना समय मिलेगा बात करने को। लेकिन मोटा मोटा सब लोगों ने जिस इशू पे बात किया है, सोशल जस्टिस, कास्ट सेंसस, रिजर्वेशन, जुडिशियल रिजर्वेशन, चाहे मेडिकल पीजी रिजर्वेशन हो या क्रीमी लेयर की बात हो या वाइस चांसलर्स की जो इश्यूज है, उस मुद्दे को सभी लोगों ने उठाया है। सब लोग जानते हैं कि RJD played important and significant role in implementation of Mandal Commission report, and Bihar government was the first to implement it. मंडल कमीशन को लागू करने में राष्ट्रीय जनता दल और खास तौर पे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और बिहार पहला राज्य था जिसने मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट किया। और हमारा सोशल जस्टिस हैज बीन आवर प्राइमरी एजेंडा। जो सामाजिक न्याय जो है वो हम लोगों का प्राइमरी एजेंडा शुरू से ही रहा है। और कास्ट सेंसस की अगर बात की जाए तो उस समय शरद जी भी थे, मुलायम जी भी थे, पार्लियामेंट में लालू जी भी थे। कास्ट सेंसस की डिमांड की गई थी, शैक्षणिक तौर पे, आर्थिक तौर पे और जातीय तौर पे, कि देश भर में जो है जातीय जनगणना होनी चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए। इससे जो रियल पिक्चर जो है देश का, कौन कितनी किसकी आबादी है, वो साफ हो पाएगा, और उसी हिसाब से बजट अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ प्रोपोर्शन, उसी हिसाब से बजट तय किया जाएगा। लेकिन हम साफ तौर पे देख रहे हैं कि जिस लड़ाई को हम लोगों के नेताओं ने या काफी लोगों ने जो मिलके लड़ा था, आरक्षण की लड़ाई हो, मंडल कमीशन जब लागू किया जाए तो मंडल का जो दौर था वो हम लोगों ने बखूबी देखा है, जाना है। आज कहीं ना कहीं से जो लोग सत्ता में हैं वो लोग अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं। आरएसएस का अपना एजेंडा है, और आरएसएस का पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए क्या दिल में है ये सबको पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और मौजूदा जो सरकार है, हम लगातार बार बार कहते रहे हैं हर एक प्लेटफॉर्म पे, लोगों के बीच भी हो, मीडिया में भी हो, या सदन में हो या सड़क पर हो, हम लोगों ने कहा है कि जो लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं, ये लड़ाई जो है आसान नहीं है। क्योंकि मौजूदा सरकार में अगर आप लोग देखें तो ये लोग आरक्षण विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, और ये लोग तो संविधान को नहीं मानते। तो देश में अगर आप देखें अभी वर्तमान की स्थिति को, अगर देखें प्रेजेंट सिचुएशन वी सी इन आवर कंट्री, तो पूरी तरीके से इमरजेंसी लागू है, अघोषित इमरजेंसी लागू है पूरे देश में, और लगातार जो है आरक्षण को समाप्त किया जा रहा है। आरक्षण तो छोड़िए, ये संविधान के, भारत के संविधान को खत्म कर रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो उसी को नहीं मानते हैं, क्योंकि वो लोग बाबा गोवलकर को मानने वाले लोग हैं। जो बंच ऑफ थॉट्स जो किताब है, मौजूदा सरकार उसको जो है फॉलो कर रही है। तो इस दौर में जो लोग भी सच्चाई के लिए लड़ रहा है, अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, उन पे क्या सितम ढाया जा रहा है वो हम सब लोगों ने देखा है। कोई इसमें बात जो है छुपी हुई नहीं है। संविधान खतरे में है तो बेशक जो है आरक्षण खतरे में है, और जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है,
उन सबको तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। और जस्टिस की अगर बात की जाए तो हमको नहीं लगता कि इस देश में जस्टिस लोगों को मिल पा रहा है। लोग मर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक हुकूम के लिए लड़ रहे हैं, और संविधान में, डेमोक्रेसी में सबको जो है बराबर का हिस्सा जो है, हिस्सेदारी दी गई है। और कहीं ना कहीं से बड़े शातिराना ढंग से, बड़े चालाकी से इन चीजों पे हमला बोला जा रहा है। तो हम लोग तो, लालू जी आज शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने मजबूती से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, और पॉलिटिकल वेंडेटा के थ्रू जो है आज हम लोगों के बीच नहीं है, उनको रांची रखा गया है। लेकिन आज तक हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने घुटने नहीं टेके, चाहे कितने भी जुर्म ढाए गए हों, कितना भी केस मुकदमा सिर्फ हमारे पिता पे ही नहीं, हम पे भी किया गया, हमारे पूरे परिवार पे भी किया गया। लेकिन हम लोग जो आइडियोलॉजिकल जो फाइट है, जो हमारी विचारधारा है, उससे कभी भी हम लोगों ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दुख की बात है कि अभी ओबीसी में जो यूनिटी जो होना चाहिए, खास तौर पे अगर उत्तर भारत की बात की जाए, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, लेकिन आप अगर नीतीश कुमार जी की पार्टी को देख लीजिए, नीतीश कुमार जी को देख लीजिए, तो उनका कोई भी एजेंडा जो है साफ नहीं है। चाहे मेडिकल पीजी रिजर्वेशन के बारे में हो, 13 रोस्टर के बारे में रहा हो, कुछ भी बयान, स्टेटमेंट जो है इसके पक्ष में नहीं रहा। चाहे आरक्षण के बारे में हो, कभी भी। तो जो यूनिटी जो उत्तर भारत में, खासतौर पे पॉलिटिकल पार्टी में और नेताओं में जो दिखनी चाहिए, या और लोगों में जो दिखनी चाहिए, वो नहीं दिखती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा मेडिकल पीजी रिजर्वेशन में जो यूनिटी साउथ में जो दिखा, हम तो धन्यवाद देना चाहते थे डीएमके के नेताओं को कि उन लोगों ने लड़ाई जो है हर तरीके से मजबूती के साथ रखा है। और मेडिकल पीजी रिजर्वेशन वाले में भी हम लोगों ने, हम उस पे तो हम लोगों ने कई बार जो है हर जगह चर्चा भी की है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को तो इंश्योर करना चाहिए ओबी रिजर्वेशन जो पीजी सीट्स में लगातार जो है 10-10 हजार सीट जो है हम लोगों का जो अधिकार जो बनता है वो खाया जा रहा है। और ये वेल प्लान्ड वे में जानबूझ करके ये सारी चीजें की जा रही है। अब क्रीमी लेयर की बात हो तो जानबूझ के, अभी तो और भी इन लोगों का एजेंडा है, अभी तो पहला क्रीमी लेयर के बहाने ये लोग घुस रहे हैं। हम लोगों ने देखा है कि बड़े चालाकी से, सतराना ढंग से ये लोग हर एक चीज को मिटाना चाहते हैं। हम लोगों को कलेक्टिवली, चाहे नॉर्थ से साउथ हो या वेस्ट से ईस्ट हो, कलेक्टिवली सबसे पहले जो है कास्ट सेंसस का डिमांड करना चाहिए। वी आर स्ट्रॉन्ग एडवोकेट्स ऑफ कास्ट सेंसस and have been fighting for caste census from street to parliament unless and until there is no caste census. We can't get actual data, facts, and can't form the policy, can't allocate the budget according to the population proportion. We all should collectively and aggressively demand for caste census, जैसे मैंने आपको कहा, नॉर्थ से साउथ या वेस्ट से ईस्ट इंडिया। और जुडिशियल रिजर्वेशन के बारे में अगर कहा जाए तो मेरी जो अपनी राय होगी, there must be all Indian Judicial Service Commission. We are more than 60% of country's population, but don't have judges in judiciary. अगर आप वही बात कीजिएगा, वाइस चांसलर्स की बात की जाए, प्रोफेसर्स की बात की जाए, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, या सेक्रेटरीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बात की जाए, तो जो संख्या होनी चाहिए वो नहीं है। तो हम लोग सब लोग लगातार इस मुद्दे को कैसे आगे टैकल करें, कैसे इस लड़ाई को लड़े। मेरे ख्याल से नेशनल कन्वेंशन राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के द्वारा जो है 5वां ये मीटिंग बुलाया जा रहा है। एक हम लोगों को सिर्फ समस्या पे ही बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक टाइम फ्रेम और एक
टाइम फ्रेम के अंदर एक रणनीति तय करके उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है और लड़ाई लड़ने की जरूरत है, आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। बार बार जो है आज हम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, कल किसी और को बनाया जाएगा, परसों किसी और को बनाया जाएगा, और डरने से काम नहीं चलेगा, चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। और देश में सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है, बहुत लोगों ने भी बोला कि जो जानकारी जो है अपने लोगों को बहुत कम दी जाती है। और जानकारी तो आप तो देखिएगा, अब तो जो न्यूज एडिट जहां से होता है, न्यूज पे भी लोग कितना, मीडिया में भी लोग जो विश्वास कर सकते हैं, हमने तो न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल भी देखना छोड़ दिया है इसी चक्कर में, क्योंकि सारी एडिटिंग कहाँ से होके आती है। आप सब लोग जो है समझदार हैं, होशियार हैं, सारा तय है। तो इस जमाने में, इस मुश्किल दौर में हम अपनी बात को, अपनी चीजों को जनता के बीच कैसे ले जाए, अपने लोगों के बीच कैसे ले जाए, कैसे उनको वैचारिक रूप से तैयार करें, ये हम सब लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और हम चाहेंगे कि राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ जो है जगह जगह जाकर के लोगों को जगाने का काम करे। और हम लोग तो हमेशा इस चीज के लिए, हमारी तो आइडियोलॉजी है और इसलिए हमारी तो नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि सबको जो है, वंचितों को, शोषितों को अधिकार हम लोग दिलाए, नहीं केवल पिछड़ों को, चाहे अति पिछड़े हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, या जो भी गरीब हो, चाहे कोई भी जाति धर्म का आता हो, हम लोगों को लड़ाई लड़नी चाहिए। हम लोग सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय पे विश्वास करने वाले लोग हैं। लेकिन आप देखिएगा कि बड़े चालाकी से सारा चीज जो है खत्म किया जा रहा है। हम लोगों को जो नॉलेज जो है, जितने लोगों को वो पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिल पाती है, तो लड़ाई कैसे लड़ेंगे। तो हम लोग सब लोग जो है इस बात को हर एक प्लेटफॉर्म पे उठाते रहे हैं और कोशिश ये होनी चाहिए कि एक व्यापक रूप पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और एक अग्रेसिव कैंपेन जो है हम सब लोगों को चलाना पड़ेगा। मैंने देखा कि जितने भी दलित ऑर्गेनाइजेशन है उनमें यूनिटी काफी अच्छी है और ज्यादा जो है जानकार भी ज्यादा है। SC/ST एक्ट जब खत्म हुआ था तो मैंने अपने सारे विधायकों के साथ रोड पे आकर के आंदोलन दिया था, भारत बंद किया गया था, उसका समर्थन हम लोगों ने किया। केंद्र सरकार को प्रेशर में आकर के जो है उस एक्ट को जो है वापस लेना पड़ा। तो हम लोग जो है देखते हैं कई जगह इस तरह का मूवमेंट हम लोग नहीं चला पाते हैं, कोशिश की जाती है, लेकिन हम लोग जो है बटे हुए लोग हैं, बट गए हैं। अब कारण क्या है बटने का? अब ज्यादा जो एजेंडा RSS द्वारा जो चलाया जाता है, दंगा फसाद, हिंदू मुस्लिम सोसाइटी को जो कॉम्युनलाइज इस प्रकार से किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे अपने समाज के लोगों में भी जो हमारा जो वर्ग है, OBC वर्ग है, उसको गुमराह किया जा रहा है। जो सही जानकारी ना दे करके लोगों को भड़काया जा रहा है और वो लोग जो है कहीं ना कहीं से इस चीज को समझ नहीं रहे हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि ये चीजें, जो हकीकत जो है, जो सच्चाई है, जो अधिकार है, उन लोगों को बताया जाए और दिलाया जाए। तो इसमें कैसे, अब सब लोग हमसे बड़े हैं, बुद्धिजीवी हैं, जानकार लोग हैं, देश से ही नहीं US से भी लोग यहाँ देख रहे हैं कि जुड़े हुए हैं, and how we should tackle this problem and situation and how we should come together and fight unitedly, strongly and very aggressively, that we should need to discuss on that also, and we should have a plan, action plan, and we should implement accordingly. तो एक टाइम फ्रेम के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। आप सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं और खासतौर पर ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देते हैं। बिहार में अभी आफत आई हुई है, चाहे कोरोना का हो या बाढ़ का हो, फ्लड का हो, इसलिए फिर भी हमको लोगों ने बुलाया, ऐश्वर्या जी ने भी फ़ोन किया था, सब लोगों ने, ऑर्गेनाइजर्स सब लोगों ने बोला थोड़ा समय देने के लिए, तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता था। और फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल से इस कन्वेंशन में राष्ट्रीय महासंघ OBC के हम जुड़े हैं। आप लोग सब लोगों का विचार सुन करके, सुझाव सुन करके काफ़ी अच्छा लगा। सब लोग जो हैं चौकन्ने हैं, तैयार हैं, लेकिन एक मजबूत फोर्स हम सब लोगों को बनना पड़ेगा।
और ऐसे लोगों को भी पहचान करनी पड़ेगी जो कहीं ना कहीं से अपने लोग होते हुए भी बहक रहे हैं और उनको सही लाइन पे लाने की जरूरत है। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Thank you. Thank you very much, Tejasvi ji. I think you touched the core essence of what the OBC movement should be. And the biggest problem is we are not united like our brothers and sisters from SC and STs. I think we need to learn a lot from them. Being 52 or 52.5% of the population, close to our 80 crore people of India, we should get united. I think your message is very much on the target. And you also touched on some of these reservations. I got some data. So in terms of Group A, Group B, Group C, and Group C Safai, total, we are about close to 35 lakh employees. And out of that, total employees, and the number we getting is about 21.57%. In case of IIMs and IITs, in IIM, we have total of 784 positions, and we are only 27 people in that. And IITs, out of 23 of them, 8,856 positions, and we have only 329 people. So it's a long way to go to claim our 27% of reservation. And in terms of professors, so we have a total of 1,125, and in that 0. Associate professors, we have 0. Assistant professors, out of 7,741, we are only 1,113. So this is the very, very unfortunate thing. And also in terms of the higher grade positions, deputy secretary grade and higher. So we have secretary, total 89 people and 0 OBCs. Additional secretaries, 93, we have 0. Joint secretaries, 275, we have only 19 people. Director level positions, 288, we are only 40 people. Deputy secretaries, 79, and we are only 21 of them. So I think this shows that it's time for us to wake up and claim our share of these reservations that is constitutionally granted 27 years ago for 27%. With this, I would like to request the MCs to introduce the next speaker. Honorable Vijay Vadetiwar is current MLA from Brahmapuri, Maharashtra, as well as a former state minister of water resources. He is the most prominent and strongest leader from the Indian National Congress Party. He was elected 2 times as a member of the Maharashtra Legislative Assembly from Chimur in 2004 and 2009. His interests are working for the development of the poor and being associated with various social societies. He organized and arranged awareness camps and activities to spread out and instill the thought of Rashtra Sant Tukdoji Maharaj through distribution of various books and publications like Gram Gita. He also fought for the rights of farmers, farm, labor, and forest tribes, and solved the problems of rural and unemployed youth. We now welcome Honorable Vijay Vadetiwar to deliver his speech. सबको बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। विशेष रूप से इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये नेशनल ओबीसी को जोड़ने के लिए मैं सबके प्रति सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मुझे खुशी हुई कि बहुत दिनों के बाद हम अपने सही एजेंडे पर काम करने के लिए ये कोविड-19 का बड़ा प्रकोप होने के बाद भी सब इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने तेजस्वी जी से लेकर ऑनरेबल हमारे सम्मानीय जी ईश्वरैया साहब का भी विचार सुना। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इस कन्वेंशन में पार्टिसिपेट हुए। मैं सबके लिए विशेष रूप से आभार मानूंगा कि मैं भी एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के इसमें प्लेटफॉर्म पे इसको फॉलो करता हूँ, इसको काम करता हूँ। आज मैं महाराष्ट्र में ओबीसी विभाग का एक मिनिस्टर करके काम कर रहा हूँ। विशेष रूप से अभी सबके विचार सुनने के बाद सही है कि मंडल आयोग जो
जिसकी मंडल आयोग को शुरू करने के बाद में, लागू करने के बाद में, हमारे सब ओबीसी को मंडल कमंडल को जो विभाजित करके हमको गुमराह किया गया था। और इसी में ये ओबीसी युवा उस वक्त झांसे में आया था, कमंडल के झांसे में आया था, और इसीलिए बड़ा नुकसान आज हमको उठाना पड़ा है। उस वक्त अगर सही रास्ते पर हम लोग चलते तो आज मुझे लगता कि किसका आभार माने कि इस देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद में डॉक्टर बाबा साहब ने हमें सही हमारा हक दिलाने की कोशिश की। हम लोग चाहे दलित हो, ओबीसी हो, इस लड़ाई के साथ में हमको विभाजित करने का काम किया। ये लड़ाई अगर हम लोग ओबीसी के साथ दलित आदिवासी को लेकर लड़ते, ये ताकत और बड़ी बन जाती। ये एक पॉलिटिकली इसको गुमराह करने की कोशिश उस वक्त की गई थी, और उसमें हम लोग उसमें आ गए। आज महाराष्ट्र का एक मंत्री के नाते और हमारे स्पीकर भी एक ओबीसी के जुझारू नेता के रूप में हमारे स्पीकर भी काम करते हैं। हमने महाराष्ट्र की असेंबली में उन्होंने ही एक प्रस्ताव रखा था, और उसी को हमने ओबीसी के सेंसस के लिए, जनगणना के लिए हमने वो ठराव पारित भी किया था। मैं भी माननीय हमारे चीफ मिनिस्टर उद्धव जी ठाकरे जी से लास्ट वीक मैंने उनसे चर्चा की, और हमने यही कहा था कि अगर बिहार के असेंबली में ओबीसी का अगर सेंट्रल गवर्नमेंट तो मानती नहीं है, आज सेंट्रल गवर्नमेंट किस ओर जा रही, किस मुद्दों को लेकर युवाओं को भड़का रही है, इसके बारे में कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, और ना उससे कोई अपेक्षा रखने की बात है। जब हमने लास्ट वीक, मैंने एक 10 दिन पहले मैंने सीएम साहब से मुलाकात की, तब हमने ये रखा था कि उनके सामने कि अगर बिहार में ओबीसी का सेंसस होता है तो महाराष्ट्र में भी आप करिए, और ये काम आपके नेतृत्व में होना चाहिए, तभी आपके ये हमारा जो महाविकास आघाड़ी का सरकार जो बना है उसको ताकत मिलेगी। ये बात मैंने उनसे कही थी। मैं तब भी सीएम साहब के जो हमारे विचार थे वो भी थोड़े मुझे पॉजिटिव लगे, और उनके सकारात्मक दृष्टि से उन्होंने हमारे साथ में चर्चा की। देखिए, इस मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने हमारे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर में शुरुआत की। हमारे बबन राव जी तायवाड़े जी का निश्चित रूप से आभार मानना पड़ेगा, उनको धन्यवाद भी देना पड़ेगा कि इनको सबको जोड़ने का काम आप इस लेवल पे, देश के लेवल पे शुरू हुआ है। तेजस्वी जी का विचार मैंने सुना कि सही है कि अपने विचार के प्रति कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। हमारे आदरणीय लालू प्रसाद साहब ने जो भूमिका मंडल कमंडल की रखी, और एक ओबीसी का नेतृत्व, बहुजनों का नेतृत्व करने की बात उन्होंने कही, तो उससे भी काफी तकलीफ उनको उठानी पड़ी। ये तो सबको पता है। आज के तारीख में भी वही है कि कल ये ओबीसी जो है, सब लोग इसमें इकट्ठे होकर अगर हम लोग पूरी ताकत से, जोर शोर से सामने नहीं आएंगे, हम ये इस लड़ाई में सब मिलकर आगे नहीं बढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि ओबीसी ये नाम भी नहीं रहेगा। हम लोग हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में भले ही ओबीसी कहा जाए, पर वो जिस विचारधारा से प्राइम मिनिस्टर बने, वो विचारधारा कोई ओबीसी के लिए, मैं कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, पर वो विचारधारा ओबीसी के हित में है क्या, यहाँ से सवाल खड़ा होता है। अलग अलग एजेंडा हर पार्टी का होता है, हर पार्टी का अलग अलग विचार होता है। इसमें आरएसएस का विचार को लेकर हमने अभी परसों ही जो विचार कल की बात है कि हमने ओबीसी के महाराष्ट्र के हमारे सब कुछ नेताओं से हमने चर्चा की। सीएम ने भी उस बारे में एक हमारे जूम से माध्यम से संपर्क किया, और उनके भी विचार ओबीसी की, ये पहली बार हुआ है महाराष्ट्र के सरकार में। आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है कि खुद सीएम ने और हमारे कांग्रेस के कुछ लीडरों ने उसके लिए आगे बढ़कर ये सब कुछ सबसे डिस्कशन करने का काम किया, सबसे बात करने का। मुझे इस वक्त अभी जो हम सब इकट्ठे होकर भारत में ओबीसी का सेंसस के बारे में दबाव डालने की आवश्यकता है। जनगणना हो तभी हम लोगों को कुछ न्याय मिलने की अपेक्षा है। घटना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत हमें दिया है, पर उसके बारे में आज कोई ये देश उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चल रहा है, ये कोई सोच नहीं सकता, ना सोचने की आवश्यकता है। जिस दिशा में आज इस संकट के घड़ी में हर कोई तकलीफ में है, तो आज भी जिस दिशा में ये देश को आगे लेके जाने की सोच बनी है, तो उससे हम आगे कैसे बढ़े, इसका भी आगे मार्गदर्शन आप लोगों से मिलेगा।
मैं एक ओबीसी का एक कार्यकर्ता के रूप में मैं इतना ही कहूंगा कि आज के तारीख में जो हम इकट्ठे आकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे बढ़े हैं, हमें हर समाज को, ओबीसी को इकट्ठा करने के लिए, ये जब कोविड खत्म होगा तो हर स्टेट में एक बैठक की आवश्यकता होगी। हर स्टेट में हम सब मिलकर, पूरे हिंदुस्तान के जितने ओबीसी लीडर आज इस कन्वेंशन में पार्टिसिपेट हुए, हम सब मिलकर आगे हर स्टेट में जाने की आवश्यकता है और वहां के कुछ ओबीसी लीडरों से और इस विचारधारा के लोगों से बात करके इसको इकट्ठा करने की जरूरत है। हिंदुस्तान इतना बड़ा है कि आज 80-85 करोड़ लोग हमारे ओबीसी भाई है, फिर भी इतने लोगों को एक साथ में इकट्ठा बांधना और इनको एक साथ में आगे इतनी ताकत होने के बाद भी हम कहाँ कम पड़ते हैं। ऐश्वर्या साहब का मैं हमेशा, वो चाहे सोशल मीडिया से हो या हर एक जहाँ पे कुछ उनका भाषण आता है, उनका विचार आता है, तो मैं उनको बारीक से एकदम माइंडली मैं उसको स्टडी करता हूँ, उसको पढ़ते रहता हूँ, उनको विचार को मैं सुनते रहता हूँ। एक ताकत से उन्होंने ओबीसी के लिए पूरे देश में सामने आकर काम शुरू किया है। मुझे देखिए, पूरे देश में अगर सोचे तो आज की हालत ओबीसी की कहीं भी जो है वो बहुत बुरी है। लास्ट ईयर में 2017-18 में यूपीएससी एग्जाम में 214 हमारे ओबीसी के लड़के यूपीएससी में पास हुए थे। केवल ओबीसी है, 214 डिस्ट्रिक्ट में ये लोग कलेक्टर बनेंगे, ओबीसी का परसेंटेज बढ़ेगा करके उनको नहीं लिया गया और उनको निकाल दिया गया। आज वो अपने अधिकार के लिए, न्याय के लिए भटके थे। हमने कोई लाख कोशिश हमने की, हम सब लीडरों ने की, पर उनको हम न्याय दिला नहीं पाए। हमने उनको उनका राइट देने पे कम पड़े, ये सबको पता है। अब रहा रिजर्वेशन की बात, तो रिजर्वेशन तो अभी देश में खत्म करने की कोशिश की जा रही है, कोशिश होते जा रही है। अभी कोई देखिए, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र का रिजर्वेशन तो हमारा अभी 73% पे गया है। अब 73% रिजर्वेशन जाने के बाद अब हम लोगों को ऐसा लगता है, कोई हमारे समाज को, कि हम लोग ओबीसी में नहीं रहना चाहिए, हम ओपन में जाना चाहिए। ये लोगों की सोच बनते जा रही, क्योंकि रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं मिलता। कुछ इसको रिजर्वेशन में हमारे ओबीसी के ऊपर अन्याय होता है। हमने अभी नाना पटोले जी के अध्यक्षता में मीटिंग लिया था। अब वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर 1 लाख ओबीसी के सर्विस, यह हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट है, 1 लाख लोगों का प्रमोशन पिछले 6 साल से सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका दाखिल की थी। 1 लाख लोगों का हमारा प्रमोशन अभी रुका हुआ है। हर ओपन के लोगों का प्रमोशन होते जा रहा है, ओपन कैटेगरी, हमारे कैटेगरी। ये क्या कहते हैं, यहाँ पे केवल ओबीसी नहीं है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ये तीनों कैटेगरी के लोगों का रिजर्वेशन को, प्रमोशन को क्यों रोक लगाई? तो 1 टाइम प्रमोशन आपको कैटेगरी में मिला है तो आगे का प्रमोशन नहीं मिलेगा। अब वो सुप्रीम कोर्ट में कुछ पेंडिंग है, उसका फॉलो हमारा चल रहा है, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग कैबिनेट में बात हुई है, इसके लिए एक सब कमेटी भी हमारे गवर्नमेंट ने बनाई है, वो सम्माननीय भुजबल साहब के नेतृत्व में भी कमेटी बनी है, वो तो चलते रहेगा। पर इसके बारे में इतना अन्याय, ये 5 साल में कैटेगरी में जो आदमी मेरिट पे आता था उसको ओपन करके ट्रीट किया जाता था, वो ओपन में उसका सिलेक्शन होता था। अभी पिछले 5 साल महाराष्ट्र में हो, देश में हो, उसको अगर मेरिट का भी स्टूडेंट हो तो अगर कैटेगरी का है तो उसको कैटेगरी में डाला जाता है और सबको फिर बाकी उसको ओपन में उसका सिलेक्शन नहीं होता है। ये पहले होता था, आज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ओबीसी के बारे में इस लोगों की भावना क्या है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। आज रिजर्वेशन के बारे में हमारे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के लेवल में 8 डिस्ट्रिक्ट में रिजर्वेशन पूरा कम हो चुका है। वो 6%, 9%, 10%, 11% रिजर्वेशन केवल ओबीसी के लिए रखा है। एक है इसमें विदर्भ, महाराष्ट्र के 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे, तो वहां पे हम लड़ाई उसके लिए लड़ते हैं। वो अभी उसके लिए भी सरकार बदलने के बाद हमने कोशिश की, हमने पिछले 5 साल भी कोशिश की
उसको नहीं मिला। अभी ये मामला सुलझने की कोशिश हो रही है। इसके बारे में अच्छी मीटिंग हुई है और मुझे लगता है कि ये विषय को हम लोग निश्चित रूप से 8 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग न्याय दिला पाएंगे। मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए यही कहूंगा, बहुत सारी योजनाएं तो बनते रहेगी, पर असली हक की बात होती है हमारा रिजर्वेशन हर क्षेत्र में रहे, वो बना रहे, उसको लिए पूरा मिले। जो 27% है, महाराष्ट्र की तो बात अलग है, आपको थोड़ा बता दें कि महाराष्ट्र में 19% रिजर्वेशन है, 27% था। हमने विजेएनटी को ABCD वो जो हमारे उसमें विभाजित किया गया, SBC को 2% दिया, विजेएनटी को दिया गया, उसमें केवल 19% रिजर्वेशन किया गया। हमने सबकी मीटिंग लेकर यह कहा कि आप जितने भी OBC है उसमें जो डिवीजन हुआ है वो सब इकट्ठे आए, तभी हम सबको न्याय मिलेगा। तो वही पूरे देश में भी जो मंडल आयोग की अमलबजावनी होने के लिए हो या रिजर्वेशन अपना 27% मिलना चाहिए, हर क्षेत्र में मिलना चाहिए। आज आप भूल जाइए कि IAS अधिकारी भी अगर हमारा OBC आदमी बनता है, UPSC एग्जाम पास करता है या उसमें सेक्रेटरीट में जाता है तो उसको साइड पोस्ट ही किया जाता है, क्योंकि आज प्राइवेट सेक्टर के लोगों को मिनिस्टर में, सेंट्रल गवर्नमेंट में सेक्रेटरी बनाया जा रहा है। तो इससे क्या मैसेज जा रहा है, ये आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि हम लोग इकट्ठे होकर अगर इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ाएंगे, आप सबका साथ, हम तो है आपके साथ, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप लोगों से कि ये कोविड के इस संकट में भी आप लोगों ने ये कोशिश की कि OBC को जोड़ने की, उनको इकट्ठा लाने की, OBC लीडरों के विचार के बारे में, आगे की लड़ाई के बारे में। लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी और रास्ते की लड़ाई आवश्यकता पड़ी तो, क्योंकि सरकार जो भी विचार से है उसमें OBC का विचार बिल्कुल कहीं भी नजर नहीं आता है। अगर नेशनल एजेंडा की इनकी बात कहे तो हम लोगों को न्याय मिलने की अपेक्षा है। केवल हम लोग चर्चा से कुछ मिलेगा इसके ऊपर हमारा कोई विश्वास नहीं है। हमें रास्ते की लड़ाई लड़कर ही हक मिलाना, हक प्राप्त करना पड़ेगा और अपना हक के लिए उतरना पड़ेगा रास्ते पर, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आप सबको कि विशेष रूप से वेबिनार के माध्यम से हमारे प्रवीण कुमार जी हो या हमारे सब जितने भी इसमें पार्टिसिपेट हुए, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। You're on mute. Yeah, thank you. Thank you very much, Vijay ji, for coming in to share your views on this auspicious occasion of August 7th. In spite of the floods and the rains in Mumbai, you were able to join us today. We really appreciate for your support and cooperation. And we need leadership of your kind of people to make sure that we all unite to preserve and protect our interest, especially the 27% and the creamy layer issues and the various other things that we are getting injustice from the administrations. So I would like to share a few numbers here without quoting any particular caste or community. I just picked a community which is a representation of 3% of the Indian population. So they have 48% of the local Sabha seats, 36% of the Rajya Sabha seats, 50% of the governors, 33% of the central cabinet ministers, and 54% of the central regular ministers, 62% of the central cabinet central secretaries, 70% of them are personal secretaries, 51% of them are university vice chancellors, 65% of them are Supreme Court judges, and 40% of them are High Court judges, and 41% of them are India's ambassadors in other countries, and 61% of them represent in the airlines. So this is a 3% of the population of India is controlling over 50% of the cream of the in terms of political, employment, and other educational related positions. I think it's time for us to wake up, look at the data, and
make your decision based on that, my fellow brothers and sisters of OBC and SC/ST community. Please wake up and fight for your rights. So without further delay, let's introduce our next speaker, Dr. R.S. Praveen Kumar, who is going to talk about how do we empower our people through education. He has done a successful implementation in the state of Telangana, and we look forward to learning from him to implement the similar things for the entire nation. MCs, please welcome Dr. R.S. Praveen Kumar. Dr. R.S. Praveen Kumar is currently an IPS officer and secretary of the Telangana Residential Educational Society, which is an organization which runs residential schools for scheduled caste, scheduled tribe, and underprivileged children. He served as the district superintendent of police in Karimnagar and Anantapur. He was a war crime investigator for the U.S. operations and a deputy commissioner of the Crime and Detective Department of the Hyderabad City Police, as well as a joint commissioner of the special branch of the Hyderabad City Police. Throughout all of his previous careers, he has provided humanitarian and educational services to the marginal, subaltern, and deprived sections of society to attain excellence in ambits of higher education, tracking for prosperity, self-respect, and self-identity. He has earned several awards, including the President's Police Medal, the United Nations Police Medal, the Independence Day Medal by the President of India, the Civil Society Hall of Fame in New Delhi, the Telangana State Excellence Award, and the World Education Forum Award. He currently stands as the Secretary of Social Welfare and Educational Residential Organizations in Telangana. We now welcome Dr. R.S. Praveen Kumar to deliver his speech. Thank you very much, Keshav, and thank you very much, Dr. Hari Panapalli. I really consider this as a great honor to be part of this conversation, which is really transformational by any standard. So I thank all the guests for their great service they have been doing for so many decades. And all these people who have just spoken before me are really stellar people of the community. The very outset, I pay my sincere respects to Mahatma Jyotiba Phule, Shahu Maharaj, Dr. Bhimrao Ambedkar, and the lady who taught my mother how to read and write, that is Savitri Bai Phule, and all these great people. So, but for their sacrifice, we would not have been here. So, in the introduction, I have been, the Keshav told me that I'm a police officer, and many of you might be wondering how come a police officer is in the education sector. So I will start my talk with that story. See, I have been the student of social welfare hostels in 1970s, and I saw poverty from a very close range. Then after a lot of struggle and a lot of preparation, I joined Indian Police Service. After that, I served in Indian Police Service for about 17 continuous years. After that, I realized that I should also pay back to the community. So I belong to scheduled caste community. So I thought I should pay back to the community, because when I went to whenever I go to my native place, I used to see lot of people in utter poverty, struggling for 2 square meals a day. And then generations after generations, they continued their age-old profession, that is daily wage earners, working as agricultural laborers, mazduri, or kheti badi, even stone cutters, all those professions where the life is very horrible. So I thought I should pay back to Constitution, Samvidhan. Then the Samvidhan and the government of India has given me this power to transform lives. So with that reason, I took a break from my policing. I went to the world's one of the best universities, that is Harvard University. I did my master's degree there. Then I came back. I did my master's degree under Mason's program. I came back, and then I volunteered to serve in social welfare and tribal welfare departments. Very rarely you find police officers entering into the departments. Otherwise, our friends like Narahari will be working as secretaries out there. But I requested the then Chief Minister to allow me to, permit me to work in these institutions. So
That is how I have been continuing here for the last 8 years. This is my 9th year. So before I go into the details of the job that I've been doing, I've requested Justice Ishwarya Garu and then Dr. Hari. So the agenda of this 5th convention of RASHTRIYA OBC MAHASANGH, National OBC MAHASANGH, so is all about the rights, is all about the census, is all about the representation according to the population, is all about justice, is all about equality. So then I said, sir, I am not competent to speak on all these things because I have never, researched on these aspects, and I don't consider myself as expert on these issues. But Justice Ishwarya sir told me for all these things, the basis is education. So without education, you cannot get all these things. I was really shocked. Of course, this is not new to me, but the statistics that are thrown by Dr. Hari Ipanapalli are really hitting me very hard. So even after 70 years of independence, the representation of OBC, the SC and ST in higher echelons of power, where the policy decisions are made and where policy execution starts. So there the representation of these communities is absolutely minimal, conspicuously absent. So in such case, what is the way out? It is only education. Education, education, education. Shiksha, shiksha, shiksha. इसी के थ्रू हम ऊंची वाली पोजीशंस में जाएंगे. So not ordinary education. So the moment you say education, yes, there are schools, there are government schools, there are private schools, there are all types of schools, but that is not education. We need quality education. All of us, we must. Who started the school for quality education? It was Mahatma Jyotirao Phule. It was Savitribai Phule. These are the people who started the education. Real education started from them. Then it was followed by a lot of Dharma movements, and followed by Dr. B.R. Ambedkar. But this education revolution was started by Mahatma Jyotirao Phule. Today, we want quality education. We want education that can really help our kids to enter into job market, enter into economy with heads held high. That is what is needed. So now coming back to the job that we have been doing. So this is very important for all the public representatives and then senior dignitaries who are in this webinar. This is very important. What something very interesting is happening in Telangana state. It's very interesting. Everybody should study this model. So today in Telangana, in addition to regular government schooling, we have Telangana government under the leadership of our Honorable Chief Minister Sri KCRG. We have started residential education. This is called as KG to PG mission. गरीब लोग, मैं इससे पहले महाराष्ट्र के बहुत सारे सीनियर पॉलिटिशियन से मैं ये सुनाऊं कि अपने लोग अभी भी वही एज ओल्ड प्रोफेशन में 3 स्क्वायर मील्स के लिए मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं. तो इस सिलसिले में तेलंगाना गवर्नमेंट ने सोचा केजी टू पीजी मिशन के रूप में नैवासिक पाठशाला हजारों सेटअप करना है. तो हजारों पाठशाला में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा होना चाहिए. अभी तेलंगाना में कम से कम 6 लाख SC, ST, OBC और माइनॉरिटी बच्चे ये नैवासिक पाठशालों में शिक्षा का रूप में पढ़ रहे हैं. So by 2022, we will have about 10 lakh students, SC, ST, OBC and minority students studying in these best possible residential schools. On every student, we are spending about 60,000 rupees per year. Students do not have to pay even single rupee to study in our schools. Not even a single rupee. We don't collect एक पैसा भी हम वसूल नहीं करते बच्चों से. और खास करके एनुअल इनकम 1.5 लाख रूरल एरिया में होना चाहिए, अर्बन एरियाज में 2 लाख रुपए होने चाहिए. तो गरीब से गरीब लोगों को हम यहाँ रखे. We are taking them at 5th class and then we are leaving them after graduation. क्या कारण है इसमें? कारण ये है कि अपने माँ बाप अनपढ़ होते हैं, मजदूरी करते हैं, उसके लिए बच्चों का देखभाल करना ही बहुत बड़ा प्रयास है, बहुत बड़ा चुनौती है. तो ये घर आने के बाद थक के सो जाते हैं. बच्चे क्या पढ़ रहे, कौन सा किस किस्म का शिक्षा हो रहा है, किस किस्म का चीजें सीख रहे, तो ये चीजों में देखने के लिए माँ बाप को इतना टाइम नहीं होता या इतना स्किल्स भी नहीं होता, नैपुण्य भी नहीं होता है.
तो इसीलिए हमारा राज्य ने ये सोचा कि रेजिडेंशियल स्कूल नववासी की आश्रम पाठशाला अंग्रेजी माध्यम में लगाने से और क्वालिटी टीचर्स को लगाने से बच्चों का पढ़ाई और टीचर ही माँ बाप बनके सब शिक्षक जो है वो सब माँ बाप बनके ये बच्चों का देखभाल करेगा। इतना बढ़िया स्कीम है। अब दुनिया में देखिए इसका रिजल्ट्स क्या है। देखिए ये रिजल्ट्स ये है, दुनिया में सबसे छोटी उम्र में एवरेस्ट चढ़ने वाली लड़की ये स्कूल से है। मलावत पूर्णा 13 साल की उम्र में एवरेस्ट के ऊपर गए, दुनिया में सबसे छोटा। और उसके बाद उससे एक एससी भी गए और उसके बाद एक ओबीसी लड़का भी गए। मैं ये चीज मैं आप लोगों को जानबूझ के बोल रहा हूँ क्योंकि अपने लोगों में ये सत्ता है, मगर हमको बोला गया आप लोगों में ये सत्ता नहीं है। We have been badly stereotyped for centuries. We have been badly stereotyped for centuries. The real knowledge have been, robbed from us. We have been kept away from this knowledge revolution. Today, Telangana is one of the best examples to give us what we have been robbed of. तो हमसे जो छीन गए वो सब चीज हमको तेलंगाना में मिलने के लिए ये एक प्रयास हो रहा है। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि अचीवमेंट ये है, और सिर्फ अनुसूचित जातियों में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट में सिर्फ मैं शेड्यूल कास्ट का बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे जातियां शेड्यूल कास्ट में पिछले 5 साल से 84 लोग पिछले 4 साल से 84 लोग IIT गए। 144 पीपल हैव गॉन टू NITs और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में 95 स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग and Delhi University में खास करके 220 students are studying. We have students in Flame University, we have in Indian Maritime University, we have about 60 students, SC, ST, OBC students. Everything is, the entire tuition fee is being paid by the government. And 90% of the students are from the poorest of the poor communities. And we have students in Nalsa. We have students in law universities and then and medical colleges. This is very important to note. To medical, Justice Ishwarya sir has been talking about NEET examination. From medical colleges in United Andhra Pradesh, we used to send only 3 to 4 people. But today, within SC alone, scheduled caste alone, we are able to, one college could produce 65 medical graduates, one college in last year. So that is the kind of investment Telangana is doing. My request to all the great politicians and the senior dignitaries here who have been fighting for the justice for OBCs and all other marginalized communities to get these residential schools right from 5th grade to degree college sanctioned in all the states. This is very important for our growth, I'm telling you, because our parents, particularly poor, I'm not talking about the 2nd generation and 3rd generation. For them, anyway, they can manage. They know how to educate their children. What about the poor people living in rural areas? What about poor people living in interior forest areas like Adilabad, Chandrapur, Bandara, Gadchiroli, then Yavatmal, Amravati? Is Rajya mein it's very difficult, particularly in rural areas. So in these areas, residential schools play a very greater role. It is not the hostels. Hostels are only for shelter. There won't be any teacher staying in the hostel during night to take care of the students. There won't be any doctor to take care of the medical problems of the students in these times. It is not possible. But in residential schools, there is a healthcare professional posted 24/7. 24/7, 24 घंटे वो वहाँ स्कूल में रहेगा और बच्चों का देखभाल करेगा. Whatever, whether it is fever, whether it is cancer, whether it is COVID, whether it is heart, whether diarrhea, whatever. So the healthcare professional is there. Today we have a command center which looks into the health of almost 3 to 3.5 lakh SC, ST, OBC children who are studying in residential schools. So budgets are not, even in central government is coming up with Ekalabya model residential schools. So one of the best schemes. Similarly, same scheme can be started for OBCs also. So the same schemes can be, the old schemes can be reorganized and then made as such kind of schemes. So investment in education is the best investment any community can make.
So even today, now during COVID times, all schools are closed. Around 160 crore children are out of schools in this world. India is also same. Almost all schools are closed and then children are staying in their homes. But in Telangana, मेरे को ये चीज आपसे बोलने के लिए गर्व होता है. तेलंगाना में around 1 lakh children, SC, ST, OBC children, they have started schools on their own in their villages. We call them as village learning centers, VLC. बच्चों खुद शिक्षक बनके लोगों का पढ़ाई शुरू जारी हो रहा है. तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं इसीलिए like Justice Ishwaraya and then Dr. Hari Ipanapalli, you have really given us a solid statistics for all of us to think about, for all of us to brainstorm, and for all of us to draw the go back to our drawing board and then draw strategies again and then reorient them not only for policy making but for also awakening of the communities. Last thing I want to tell you, all the dignitaries, it is not the only government that can develop. As a community, all the communities also must come together and seriously think about education, health, and economic empowerment. Not politics is one way of fighting for the rights, but at the same time, the awareness, the capacities can be built by strong community action. If all communities, whenever they find time, they talk about education. If all communities, if all mothers, whenever they find time, they talk about the progress reports of their children. They talk about the icons who have gone to, like, for example, our brother Narhari. He is from the same district in which I was Superintendent of Police, and he was selected for Indian Administrative Service, IAS, when I was SP of Karimnagar. Today, he is a hero in Karimnagar. Many people follow his footsteps. Like that, we need to have hundreds and thousands of people in our communities in this country, and then those people must be known. चाहे वो मोहल्ला हो, चाहे वो चौरस्ता हो, वहां इसका तस्वीर होना चाहिए. अपना घरों में, अपना भगवान के बगल में ये लोगों का भी तस्वीर होना चाहिए. Justice Ishwaraya ji is a pride of our state of Telugu states. Today our people should know who is Justice Ishwaraya, so that they know how to aspire to become judge of Supreme Court. Otherwise, they will tell you, no, we have everything is open, but we are not getting the candidates. No, that should not be the case. That should never be the case. That is not the case at all. So now opportunity matters. Otherwise, why would a tribal girl of 13 years go to Mount Everest? Don't you think that there are so many capable people in this country? Millions and millions are there. Opportunity matters. But opportunity, if is not there, we have to create opportunity. We have to grab that opportunity. That is what I wanted to say. And then I thank Dr. Hari Ipanapalli for giving me this wonderful opportunity. I thank Justice Ishwaraya sir for giving me the opportunity. And then I also thank everybody for listening to me patiently. Thank you very much. Jai Bhim, Jai Pule, and Jai Hind. Thank you very much. Good night. Thank you very much, Dr. Praveen Kumar, for joining us today. So I think you thank you very much, Dr. Praveen, for joining us today and sharing your insight into how you transformed the education system in the state of Telangana. And I'm very proud to announce that the lesson in Harvard University, the model that you introduced, has been a lesson in Harvard University. It's a very proud moment. And I went to MIT across the street in Boston. So I know exactly the kind of premier institute you studied at, and we are very proud of you. And I come from Karimnagar, and I would like to, first time I'm hearing that you served as the SP of Karimnagar. I would like to share one small story, and I will connect you how you mentored our hero, Purna Malawat. Dr. Kalam was born in a small fisherman village. He became an aeronautical engineer, a rocket scientist, a missile scientist, Bharat Ratna, and ultimately became the president of India. Unfortunately, his second term did not materialize. But genetically, we as human beings, no matter where on the planet, very close. If you do genetic identification of our people, the percentile it's very close. And that too, we as Indians, and within that Indian community, we as OBCs or STs, we are tightly connected. If Dr. Praveen Kumar could become an IPS officer, and he really transformed one soul in his life, maybe many souls that are transformed, but one thing strikes to me is Purna Malawat. I met this girl
who climbed the Mount Everest at the age of 13 years and 8 months, and nobody can beat her record because China, who controlling the Mount Everest and the Tibet, raised the age to 18 years now. So Purna Malawat will remain in the history, mentored by Dr. Praveen Kumar. Sir, I watched the Purna movie and it's very touching, and I would like to request everybody watching the show today. It's available on YouTube and Netflix and Amazon Prime. Please watch the Purna Malawat and show it to our children. That's a very proud moment. So again, if we believe in God or whatever is the supernatural power out there, when they sprinkled us on this planet, some of us fell into Bihar, Rajasthan, Srikakulam, or in Bronx and Brooklyn. And some people fell into Tata's houses, Birla's houses, Adani's houses, Clinton's houses, or Bush's houses. Those people got the resources needed to excel in their life. Whereas the people who are born in Srikakulam or Bihar or Rajasthan or some parts of UP, they're not getting the natural resources that are needed to excel. For example, when a farmer sprinkles the seeds into a soil, every seed has a genetically equal potential to sprout well and have good yield in the harvest. But some of the seeds, at no fault of them, fell at the edge when the farmer sprinkled in the soil. The water did not reach there. Some shade came in the way. Sun did not shine on it. And the soil is not great. Those seeds did not sprout well and did not get good harvest. It's not the seed's fault, just because they fell in that place and they were not getting the resources needed. If we all as a community can come together, identify the gems in our society, and if we could provide the mentoring that Dr. Praveen Kumar provided to Purna Malawat to climb the impossible task of Mount Everest at the age of 13 years and 8 months. And genetically, since we are wide identical, I think it's time to educate our people, provide all the mentoring, guidance. I think the creamy layer of our society, like Dr. Praveen Kumar or Sri Narahari Garu, or so many people, we need to come together. Our engineers should come together. Our doctors should come together. Our lawyers should come together. Our professors should come together. And our judges should come together. Our politicians should come together. So this is the time for us to take the charge and uplift our own communities. The way you raise your brothers and sisters in your family, you pay attention, you care for them. This is our extended family. Please wake up and realize this is the time for us to unite. Otherwise, as a community, we're going to fail not our life, but our future generations as well. Let's plant the seeds today and let's unite. And just this talk should not be the talk. It has to walk, and it should result in good, tangible results that can uplift our community. I would like to share some of the things one more time. Again, I'm good in numbers. So the budget for the entire BC community in the entire country is about 200 crores. Whereas one single family of industry, they have could not pay the borrowed money from the bank close to 3 lakh crores. I don't want to name the particular name, but it's about 3 lakh crores from one family entity. And another one is about close to 1 lakh crores. And then another 1 lakh crores. Like this, the numbers goes on. It's crores of rupees that is being looted, and the government is sitting silent on it. Even a 1% of this looted money can be deployed into education of SCs, STs, and BC communities. They can really transform. If you look at the numbers again, if the 10% of the Indian population is in the creamy layer, imagine if we can educate and empower the 90% of the people. Don't you think we will shine in the world? We will not be a superpower. We will not be the economic power in the world. So by 2020, it is projected, when Dr. Kalam was the president, average age of an Indian is going to be 29 years, and 1 in 5 in the world will be of Indian origin person working. If we don't transform them through education, and it will be a disaster for India and rest of the world. So it becomes our social and civil responsibility for all the NGOs, civil societies, political parties, and also the intellectual group of the entire country to uplift this 90% of the population so that they can get their fair share in the political side, economic side, employment side, and ultimately that will lead into social justice as well. So with this, no further delay, I would like to introduce the next speaker, Sri Narahari Garu. MCs, please introduce the speaker.
Our next speaker is the Honorable P. Nahari. He is an IAS officer who was recognized as the most inspiring officer in 2017. He was the Commissioner and Secretary of Public Relations in the Department of Aviation and Urban Administration. He served twice as the Vice Chancellor of the Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication. He also served as collector. He is a lyricist who has composed on social issues, government programs, and published books such as Who Owns Mao, The Making of Ladli Lakshmi Yojana, The Rise of Social Media in the Madhya Pradesh Government, and Betiyan, The Great Tale of Hinduism. He established social media wings to use websites, Twitter, and Facebook to interact with people. He is a recipient of 45 state, national, and international awards, and 3 times recipient of the National Award for Empowerment of Persons with Disabilities from the President of India and the Vice President of India. Now I welcome Honorable Mr. P. Nahari to deliver his speech. सभी को नमस्कार. I'm thankful to the organizers for inviting me to this esteemed gathering. Sir, thank you, sir. Praveen Kumar, sir, thank you so much. Justice Ishwaraya, sir, and all the senior dignitaries for welcoming me to speak on this occasion. मैं एक IAS अफसर होने के नाते अपने मर्यादा में रहते हुए अपने कुछ पॉइंट्स बताने का प्रयास करूंगा और मेरा विश्वास है कि संविधान ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमको ताकत दिया है उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति दृढ़ विश्वास रखते हुए मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में वही संविधान हमको अभी तक जिस लेवल तक जिस पोजीशन तक लेके आया है आगे भी हमको वही संविधान हमको गाइड करेगा. और मैं पूरी तरह से प्रवीण कुमार सर ने जो बातें कही हैं उसको एक बार और दोहराने का प्रयास करूंगा कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है हम सब लोगों के जिंदगी में और खास तौर पर SC, ST, BCs के लिए कितना महत्वपूर्ण है. मैं अपने जीवन के एक दो छोटी छोटी चीजें बताते हुए मैं ये बताना चाहूंगा कि शिक्षा, मैं भी AP रेजिडेंशियल जूनियर कॉलेज का छात्र हूं जो आंध्र प्रदेश में यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में रेजिडेंशियल स्कूल्स और कॉलेजेस का कॉन्सेप्ट कितना महत्वपूर्ण था और मेरे जैसे बच्चे जो मेरे पापा टेलरिंग का काम करते थे और उस स्थिति से निकलकर मैं एक IAS अफसर बना और शिक्षा मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है. मुझे अभी भी वो दिन याद है जब मुझे इंजीनियरिंग में फ्री सीट मिला था और फ्री सीट के लिए भी 3,750 रुपए का फीस भरना था और मेरे पापा के पास वो फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे. और मुझे आज भी याद है वो दिन जब मतलब ट्रेन में बैठ के हमारे गांव से हैदराबाद जाने के लिए पैसे नहीं होते थे और आज मैं किस स्थिति पे पहुंचा हूं और हम सब लोगों को इस बात को बार बार दोहराने की आवश्यकता है कि हमको क्यों वहां रहना है जहां पर निर्णय लिए जाते हैं, हमको वहां क्यों रहना है जहां पर बजट्स होते हैं, हमको वहां क्यों रहना है जहां पे संविधान में जो अधिकार हमको प्रदत्त है वो हमें ही नहीं हम जैसे और भी लोगों को हम उनको प्रदाय कर सके. इसलिए हमको वहां रहना है. वो दिन इसलिए मैं याद कर रहा हूं कि मेरे पापा जो इंजीनियरिंग फीस नहीं भर पाते थे और मेरे पापा जो वो दिन जब हम गांव से शहर तक जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते थे, आज मैं एक IAS अफसर बनकर मेरे पास हजारों करोड़ों का बजट रहता है और मैं उन लोगों के लिए काम कर सकता हूं जिनकी तड़प और जिनकी व्यवस्था हमने देखा है. तो इसलिए हमको वहां रहना है जहां पर निर्णय होते हैं, हमको वहां रहना है जहां पर सब तरह के बजटरी प्रोविजंस होते हैं जिससे कि हम और भी लोगों को फायदा पहुंचाए. इसलिए ये जो शिक्षा वाली व्यवस्था है इतना महत्वपूर्ण है. शिक्षा जिस तरह से दक्षिण भारत में खास तौर पर शिक्षा के ऊपर इतना ज्यादा जोर दिया गया है, मैं मानता हूं मैं मध्य प्रदेश में काम करता हूं, यहाँ पर भी काम हो रहे परंतु और ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है और उसी दिशा में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है. मैं इस अवसर पर निश्चित ही बहुत सारे निर्णय वर्तमान केंद्र सरकार ने लिया है उसको दोहराना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि कुछ निर्णय हुए हैं और कुछ निर्णय होने हैं जिसको हमको सबको मिलकर आगे ले जाना है. जैसे कि वर्तमान केंद्र सरकार ने जो नेशनल बैकवर्ड कमीशन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया है, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है और उसी के बदौलत जो है बहुत सारे निर्णय अभी जो
होते जा रहे हैं। और दूसरा बड़ा निर्णय जिसका स्वागत हमें करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, वो है इंडियन जुडिशियल सर्विसेज की बात जो हो रही है, जिसका मैं पुरजोर से जो है स्वागत करता हूं। और मैं चाहूंगा कि इस दिशा में हमको इस दिशा में काम होने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये भी शिक्षा से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आज नेशनल हैंडलूम्स डे है, उसके बारे में एक दो चीजें जरूर बताऊंगा। इससे पहले कि मैं कुछ चीजों के बारे में मैं बात करना चाहूंगा कि आज नेशनल हैंडलूम्स डे है, और ये दिवस जो है हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर ओबीसी वर्ग के लिए और बीसी वर्ग के लिए। और जिस वर्ग में किसानों के बाद सबसे ज्यादा आत्महत्या अगर होते हैं, वो है वीवर्स कम्युनिटी। और वीवर्स कम्युनिटी की जो उपेक्षा जो कालांतर में कई सरकारों ने किया है, और किन्हीं कारणों से जो है जो उपेक्षाएं हुई हैं, उसमें से उभरना आज हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और उस दिशा में यहाँ पे जितने भी प्रबुद्धजन बैठे हैं, मैं आप लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं कि कृपया कर वीवर्स के तारतम्य में कुछ उपाय करें, कुछ निर्णय करें। और ऐसे निर्णय हम सबको मिलकर करने की आवश्यकता है, और प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट में ये निर्णय करने की आवश्यकता है, जिससे वीवर्स के तारतम्य में जो है समुचित निर्णय और समुचित दिशा निर्देश मिल सके। आज जब कोरोना क्राइसिस वर्तमान में प्रचलनशील है, हम देख रहे हैं कि कोरोना क्राइसिस के दौरान वीवर सबसे ज्यादा प्रभावित है। उनका जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिक नहीं रहे हैं, उसके लिए मार्केट उपलब्ध नहीं है। और मेरा अनुरोध है कि इस दिशा में जो है हम सबको सोचने की जरूरत है। कास्ट बेस्ड सर्वे के तारतम्य में जो है यहाँ पे सेंसस के तारतम्य में बताया गया है। मैं अपनी पहले जो मैंने बात रखी थी, initially the point that I've tried to mention is that why there is an imminent and necessary need to conduct caste based census is because we find that we don't have any data exact data pertaining to what is the total number of OBCs in this country, and we must go in that direction, because we need to understand what is the total number of OBCs that exist in this country. According to Mandal Commission, there is 50%, 52% that OBCs exist in this country. According to an NSSO survey which was conducted some time back recently, it is about 42%. According to unofficial statistics that we understand, there are more than 62% OBCs in this country. So we need to ascertain as to what exactly is the total number of OBCs exist in this country, so that justice, again, I have to tell you very clearly that we all need to understand that this particular kind of webinar is to unite all OBCs, and I repeatedly say, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के समय में, आधुनिक समय में, जब टेक्नोलॉजी इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज इतने प्रबल रूप से आगे आ चुके हैं, नेटवर्किंग सबसे महत्वपूर्ण है। जिस समाज का, जिस सोसाइटी का, जिस जाति का नेटवर्किंग सबसे बेहतर है, वही समाज जो है आज बेहतर रूप से जो है निर्णायक स्थितियों में पहुंच जाते हैं। इसलिए वो जो नेटवर्किंग है, जिसका मैं उदाहरण देता हूं बार बार, जैसे मकड़ी का जो जाल होता है, आप उसका पैटर्न देखिए, एक स्पाइडर वेब देखिए, स्पाइडर वेब का जो आप डिजाइन देखेंगे वो पूरा नेटवर्क है, एक ऐसा नेटवर्क है जिसके माध्यम से एक अद्भुत मतलब जाल बन जाता है। ऐसा ही नेटवर्किंग जो है ओबीसी के साथ में एससी को जोड़ते हुए हमको करने की आज की आवश्यकता है। और मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि भले ही आप किसी भी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, परंतु ये नेटवर्किंग सबसे महत्वपूर्ण है। और इसमें चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या फिर इंटेलेक्चुअल्स हो, इस दिशा में हमको काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो सेंसस के अभाव में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशंस को जो है लागू किया जा रहा है। किसी स्टेट में 0% है, किसी स्टेट में 1% है, किसी स्टेट में 2% है, और किसी स्टेट में 14% है। जब इनिशियली भी बहुत सारे स्पीकर्स ने इस बात को रखा था कि जब 27% रिजर्वेशन संविधान ने प्रदत्त किया है, तो सभी राज्यों में 27% मिनिमम रिजर्वेशन क्यों लागू नहीं किया जाता है। और जब 52% तक ओबीसी इस देश में हैं, निवासरत है,
क्यों ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात जो है क्यों नहीं हो पाती है, इस पे भी हम सबको बात करने की आवश्यकता है। मैं एक दो पॉइंट्स और कहते हुए अपनी बात को विराम दूंगा, जिसमें मुख्य रूप से मैं चाहूंगा कि सभी राज्यों में ओबीसी मंत्रालय होना बहुत जरूरी है और केंद्र सरकार में भी जो है ओबीसी मंत्रालय होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जितने विषय अभी बहुत सारे वक्ताओं ने अपने अपने पॉइंट्स को रखा है, जहां से शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके प्रतिनिधित्व के तारतम्य से लेके गवर्नमेंट सर्विसेज में कितने लोग पहुंच रहे हैं, उससे लेके तमाम चीजों का अगर हम आकलन करते हैं, इतने सारे विषय हमारे संज्ञान में आते हैं और उसके लिए एक अलग से ओबीसी मिनिस्ट्री होना बहुत ही जरूरी है। पॉइंट ये कहा गया है कि जहां शिक्षा की बात आती है, जहां स्वास्थ्य की बात आती है, वहां जहां सुरक्षा की बात आती है, वहां पे न्याय की भी बात आनी चाहिए। न्याय जब तक सामाजिक न्याय, जब तक सोशल जस्टिस समान रूप से नहीं मिलता है, और वो न्याय मिलने का जो क्षेत्र है वो है हमारे तहसील से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जो है, जो न्यायालय हैं, वहां पे जो है ओबीसी के लोगों का, ओबीसी का प्रतिनिधित्व होना भी उतना ही बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस बात पे मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि वर्तमान केंद्र सरकार जिस इंडियन जुडिशियल सर्विसेज की बात कर रहे हैं, उसका हमें स्वागत करना चाहिए, उस दिशा में हमको आगे बढ़ना चाहिए और इस पे जोर देना चाहिए कि जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए। जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज की तारीख में जब से ओबीसी मंडल कमीशन आने के बाद, जब से ओबीसी रिजर्वेशन सेंट्रल सिविल सर्विसेज में किया गया है, वैसे ही अगर जुडिशियल सर्विसेज में भी ओबीसी रिजर्वेशन हो जाता है। आज हम देखते हैं बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स हरी जी ने बताया, जिसमें बहुत क्लियरली बताया कि कितने लोग एक्चुअली उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक पहुंच रहे हैं। और जहां न्याय होता है वहां न्याय करने के लिए हमारे लोग नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है, तो न्याय कैसे मिलेगा? इस बात पे जो है सबसे ज्यादा जोर देने की आवश्यकता है और मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार इस और सोच रहा है और जल्द से जल्द जुडिशियल सर्विसेज की बात हो रही है। मैं फिर से अनुरोध करूंगा हम सबको जो है, चाहे हमारे जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जिस किसी भी विचारधारा से हैं, और जितने भी हम लोग ऑफिसर्स वर्ग हैं, जहाँ कहीं भी बैठे हैं, हमको सबसे ज्यादा इस आधुनिक युग में अगर जोर देना है वो है नेटवर्किंग। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वेबिनार का उद्देश्य भी यही है कि हम सभी को जो है बेहतर नेटवर्किंग के माध्यम से हम लोग जो है ओबीसी से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उन सबको साथ में लेके चलेंगे। आजकल एक बहुत अच्छा कोटेशन हमको देखने को मिलता है, उसको दोहराते हुए मैं इस अपनी बात को विराम दूंगा कि सब खुश रहना चाहिए और उस खुशी में मेरे जैसा व्यक्ति भी होना चाहिए। इसलिए हम सबको अगर खुशी प्रदान करना है तो हम सबको प्रयास करना चाहिए और हमें अपना खुशी उन सभी के खुशी में हमको ढूंढना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Narahari ji, for joining us today. And you had some flight delays, but in spite of that, you were able to join us today. And truly appreciate the kind of points you brought up. Networking, again, the purpose of this webinar is to connect all the OBCs, SCs, STs of our brothers and sisters throughout the globe, and we are successful. Today, I'm getting reports that we have dozen channels through YouTube, social media, and television broadcasting this show, and over 5 crore people are watching this show as we speak live. So if we can extend the similar concept to continuously engage them through this kind of webinars, increasing the awareness about what their constitutional rights are granted by our great leaders, and also what kind of their educational rights, employment rights, and other privileges that they have. So I'll share like a couple of more statistics. So if you look at the numbers of this media side, we have very limited number of BCs or SCs, STs controlling the media business. That is where the media is propaganda to propose and promote only what is needed for them. So it's a media is kind of sold media now. They're not truly a mirror of what is happening in the society. So again, just going back to some numbers, close to 5 lakh crores of the money that was defaulted from the banks. Just SBI about 2 lakh crores, Punjab National Bank about 55 lakh crores, and like that the numbers go on and so on and so forth. So it's time for us to ask for our share of the numbers, to invest in uplifting the marginalized communities,
and also in terms of their education, their healthcare, their employment, and ultimately providing political empowerment. Nobody is going to give us. We are asking and tapping the wrong doors. If 3%, 5% of the people are controlling, why do you think they're going to help if you don't help yourself? I think it's time for us to empower ourselves. We need to come up with our own way, and we need to stand by together so that we can fight for our rights until we succeed. I think time to network, as you said, and also get all the issues identified. So there may be several differences. Even you have within the family also brothers, sisters, and father, they have difference of opinions, but when the time comes, they unite if somebody is attacking us. So we don't need to go and attack anybody else. We respect all, but we worship ourselves. So whatever it's important for us, I think we need to take up and move forward. So this concludes the speakers, but we have more time to ask some questions. I'm getting a lot of questions from different channels. I would like to ask if some of you can stay back and share your thoughts on it. So first question I would like to ask our OBC Sangh President Babanji, why we cannot have the proportionate representation in the political system. For example, the MPs, the MLAs, why we cannot have. Could you please turn on your speaker and start talking about it? Or anybody else on the panel can answer this question. What is the way forward to ask for proportionate representation in the political process for the MPs, MLA seats? Why we cannot have that? At the local level, I'm sure we have some kind of reservation. Justice Ishwaraya ji, could you please answer that? Or any Vijay ji, Tejasvi ji, if you are still on the call, if you can answer this question. Yes, Hari. Yes. Answer this question. Insofar as the child caste scheduled tribes are concerned, there is a constitutional reservations because of their untouchability and the Adivasis. Insofar as the democracy, under the democracy, everybody has got a right to have the equal representation. That is the reason why Ambedkar said, then get the education and vote. You do vote for yourself only, your community. Therefore, these two things, as Dr. Praveen and Narahari said, really we should educate ourselves and we should then know about our rights, the historical the discrimination committed on us. Therefore, it is nobody will give. Parliament, if you beg, if you demand, they are not going to give our due share. You take it insofar as the local bodies are concerned, they have given 33% reservations. Constitution says it is open for the state legislatures to make a legislation to have the reservations for the backward classes. Scheduled caste, scheduled tribe, they have proportionate. Women 50%. But backward classes as concerned, states have made legislation. For example, undivided state of AP made legislation for 34%. But High Court struck down. You can't have 34% because it is crossing 50%. Therefore, STs, OBCs put together, it is 60%. Therefore, you should get back 62%. You should get back 50 only. That's how 22% reservations we have lost it. Therefore, this is government, the legislature is not going to give, but as our Vijay Vadette said, and Nana Patole said, and all of you said, unless we educate ourselves, enlighten ourselves, then give vote for our own community, then we will not be able to send our representatives to the legislature and the parliament. Therefore, whoever is there now, luckily, what Narahari says now, because of residential schools, some of the jewels, diamonds have studied and they are rendering service. They are independent. They are not henchmen of the party, henchmen of anybody. But whereas in the party system is concerned, any OBC or SC, ST is concerned, he is a member of the parliament of the Congress or BJP, but he doesn't belong to the OBC. He doesn't have any answer.
Therefore, they cannot speak independently, openly against the policy of the party. Therefore, we are not. That is the reason why, as Ambedkar said, even by these reservations, favor of scheduled caste, scheduled tribes also, they cannot represent their real community, because our election system itself is undemocratic. Therefore, it's a party, they nominated post, party selected. Therefore, the people, that is the reason why this voting system, as Ambedkar said, don't have any reservations. Give reservations in proportion to our people will elect whoever the real leader they will elect. Therefore, that has not become possible now. Therefore, we should establish a system now. We should able to elect our real representative, our heroes, send them to the parliament and the legislature, so that they will make the law. So that is the reason why, if after retirement, if Narahari Praveen, if we elect them, then how much commitment they will have them. Therefore, such people should represent our community. That's how we can have not only the proportion to our population, we can have much more, and we have to look for that. Thank you. Thank you very much, Justice Ishwaraya ji, for that detailed response. I think it's time for the political parties also self-impose this kind of mandate that they need to truly represent the population from different constituencies throughout the nation and identify people, if not prepare leaders from that community to make them elected to represent, because they understand the problems of that particular community. Until and unless we have a true representation, we will not. So the next question we have, if you can please brief your responses, so that we have so many questions. So why the government is not doing this caste-based census? So Baban Taiwada ji, can you answer this question? Yes, sure. Sir, हमें 100% विश्वास है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की सत्ता इस देश में हो, उन्हें ये डर है कि अगर ओबीसी की सही पॉपुलेशन बाहर आ जाए तो इस देश में सिर्फ ओबीसी राज करेगा, और ओबीसी को उनके पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेशन में सारे बेनिफिट देना पड़ेगा। इसी के डर के माध्यम से यह देश स्वतंत्र होने के बाद आज 70 साल हो गए, लेकिन ओबीसी का कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं हो रहा। व्हाट इज द रीजन? अप टू 1931, फ्रॉम 1871 टू 1931 अंग्रेजों ने हमारा सेंसस किया, और वही सेंसस के आधार पर काका कालेलकर कमीशन हो या बीपी मंडल कमीशन हो, उन्होंने ये बताया कि ओबीसी आर 52%। अभी कहा गया था कि कोई बोलते 52% है, कोई बोलते 62% है, कोई बोलते 42% है। वी मस्ट नो व्हाट नंबर वी हैव एग्जैक्ट, और वो अगर हमें मालूम हो गया तो हम लोग हमारे कास्ट के बेस पे हमारा हिस्सा, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी, ये आधार पर ये ओबीसी अपना हक मांगेंगे। यही डर से सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग ओबीसी का सेंसस नहीं कर रहे, और इसीलिए ये ओबीसी का बैकवर्डनेस दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। रीजन इज दैट कि कॉन्स्टिट्यूशन 16(4) हो या सेक्शन 40 हो, ने जो राइट्स दिए हैं वो हमको 1952 से लागू करने के लिए 1992 40 साल वेट करना पड़ा, और अभी लागू होके 27 साल हो गए, लेकिन फिर भी हमारा हक हमको नहीं मिल रहा है। जैसा कि हमने जब भी कहा कि 27% एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन में रिजर्वेशन होने के बाद ओनली 13 to 14% सीट्स आर फिल्ड अप, अदर्स रेस्ट आर वैकेंट। व्हाई द फंड्स आर नॉट अलॉटेड by the central government or any state government in the proportion of population of the OBC, and that's why the backwardness of the OBC are increased day by day. वैसे वो वैकेंट नहीं है, वो लोग ले ले रहा, अपने हिस्सा वो लोग ले ले रहा। Thank you, Babanji, for that answer. So we have several questions coming, but I'm very select in asking you. So what is the reason OBC quota is not implemented in the medical, UG and PG admissions, and how can we make it happen? So who can answer the question? Anybody on the
speakers panel, please? Can I answer? If not, Justice Ishwaraya ji by default. Thank you. Yes, भाई साहब अपने it's a simple है अपने the states governments either two they used to give our reservations 29% in Andhra Pradesh, 29% the OBCs as per the category wise, then 16.5 SCs, then 7 for the STs, 49.5. Then when the NEET came, 50% of the seats have taken to the national pool. वो 50% में वो लोग अपने ग्रैब करना चाहते, अपने हिस्सा वो लोग बच्चों को देना चाहते. सिंपल है, क्योंकि this is there is no answer. When I filed the Supreme Court, then Tamil Nadu government, the DMK, they have filed the case in Madras High Court recently. They have given the excellent judgment. No answer at all, and beautiful judgment has been given. I think next year the government of India also will come down, and we are going to get. And sorry for out of the text. When Dr. Praveen and the Narahari said about the education, and you have also stated only 1,200 crores has been allotted for the backward classes. I tell you, in the state of Andhra Pradesh, 26,000 crores has been allocated for the education from KG to higher education, and all the government schools under Nadu Nedu scheme, they are making the infrastructure by spending crores of rupees similar to the residential schools. And after these some years, Andhra Pradesh will become the hub of the education center for the whole of the world, and total social fabric, social system is going to change. That is the reason why I said, Dr. Praveen, I will speak only on the education. Education is the tool. As Jyotirao Phule said, education only ends the social discrimination, social injustice, inequality, and all answer for everything is their education. Our people are diamonds. You see our IAS officers, the yellow, they are diamonds. Therefore, but equal opportunities are not being given. If equal opportunities is given, we will be head of those definitely. Thank you. Thank you, Justice Ishwaraya. I would like to just add a point saying that we understand that this is a major issue which is actually affecting both the undergraduate and PG seats, medical seats in the entire country. This is a major issue. My request is that if one issue which needs to be immediately, because this is a time when admissions are in process and things are happening, this is the most important thing. अगर एक विषय जिसको ओबीसी महासंघ को तुरंत उठाना चाहिए और जिसके लिए अगर सभी स्टेट गवर्नमेंट्स एक साथ लिख के केंद्र सरकार को भेजेंगे, मुझे नहीं लगता कि केंद्र सरकार जो है इस पे विचार नहीं करेगा. माननीय ईश्वरैया जी ने इस इशू को उठाया है, डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, बट मुझे लगता है कि ये कन्वर्जन में है, ये इट्स अ मैटर ऑफ कन्वर्जन व्हिच नीड्स टू बी हैंडल्ड. Madras High Court stated that now the PG admissions are already over. PG at counseling is already over. Therefore, this year cannot be done anything. Therefore, the Madras High Court directed to implement from the next academic year onwards. And Andhra Pradesh Chief Minister also is writing a letter to give our own share. Don't take away the 50% reservation. Therefore, from next year, I think it is going to be. Thank you. But we should fight it. Thank you very much. We'll move to the next question. So, why should the BP Sharma committee report regarding non-creamy layer be rejected completely by the government? Sir, it's a simple answer is, I have given my report when I was the chairperson, where I met I met the Prime Minister and the Amit Shah and Rupendra Mishra in both 3 meetings. Then I have convinced them, stating that we want our 27% reservations. Therefore, it's not the question of the income limit or 6 lakhs, 8 lakhs, 18 lakhs. The question is, you give our share. Therefore, you should reorganize the creamy layer system.
But the simple thing is when they have just like a tiger addicted or habituated to eat the flesh of the deers and others, and when they're enjoying our share purposely, knowing fully well it's an illegal, they are doing perpetuating the illegal. Thank you, Yes, brother. this point again, this has come. I mean, this हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए और माननीय जस्टिस ईश्वरैया जी ने और सभी ने किया है कि सतना के जो सांसद गणेश सिंह जी ने इसको बहुत अच्छी तरीके से रखा और मुझे पूरा विश्वास है कि देखिए इस तरह से अगर कॉन्क्रीट एफर्ट्स करेंगे तो डेफिनेटली जो है, मुझे पूरा विश्वास है, अभी भी विश्वास है कि जो बीपी शर्मा कमेटी के जो सिफारिशें हैं वो लागू नहीं होने वाले हैं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। परंतु कॉन्क्रीट एफर्ट्स और जिस तरह से सांसद महोदय ने एक ओबीसी होने के नाते जिस तरह से प्रस्तुत किया है और जिस तरह से अपने खुद के मतलब जिसको हम वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात कहते हैं, जो इतर वोट बैंक कहाँ से निकल जाएगा वाली बात ना सोचते हुए भी उन्होंने इस बात को जिस तरह से रखा है, मुझे पूरा विश्वास है कि यही एफर्ट्स जो है हम सबको करने की जरूरत है। Thank you, Narahari ji. As Narahari said, it's very right. When the parliamentary committee chairman unanimously consisting of all parties recommended, then where is the power? It's an incentive to the parliamentary committee to only to overcome. They have made an attempt to appoint the Sharma committee, and they are influencing the NCBC also. But because of this kind of the webinars and the mood of the OBCs, government now is rethinking. Let us see and let us hope for them, as Brother Nara said. Thank you, Ishwarya ji. And the next question is about, we all agree that there has to be a BC ministry, OBC ministry at the state level as well as at the central level. So I see Vijay ji still on the session. Vijay ji, if you can share your experience, how do we make this demand implemented in every state as well as at the central level to have an OBC ministry? Because we are about close to 55% if true census are taken. If we cannot have a ministry to address this particular community, which is the majority of the Indian population. Vijay ji, if you can turn off your mute button and answer this question. If not, any other panelist can answer as well. We'll go with Vijay ji first. Yes. Thank you जी. Thank you. नमस्कार. आपने सही सवाल पूछा है कि ओबीसी मिनिस्ट्री से हम क्या कर सकते हैं। मैंने अभी पहला प्रपोजल दिया है कि देखिए, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर में शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट के लिए शबरी और रमाई नाम से घरकुल योजना बनी है। ओबीसी के लिए ऐसी कोई योजना नहीं बनी है, कोई स्कीम नहीं है कि ओबीसी को हम छोटा घर भी दे सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्राइम मिनिस्टर आवास योजना नाम की योजना बनाई थी, उसका कोई ओबीसी के लिए बेनिफिट नहीं है। वो उसकी कैटेगरी वाइज अ ब क ड ऐसे बना गया था ABCD, पर उसका बेनिफिट नहीं मिलता। हमने पहले इसके लिए 1000 करोड़ रुपए के प्रावधान करने की कोशिश की कि जो केवल ओबीसी के लिए ये घरकुल का ये आवास योजना का लाभ उठाए, वो महाराष्ट्र सरकार की स्वतंत्र योजना बने। इसके साथ में हमने अभी 72 हॉस्टल्स ओबीसी के लिए, एक डिस्ट्रिक्ट में 2 हॉस्टल बॉयज एंड गर्ल्स, उसका भी प्रपोजल हमने फाइनल करके रखा था। कोविड की वजह से थोड़ी इकोनॉमिकल स्टेट की कंडीशन ठीक नहीं थी, उसके लिए थोड़ा पेंडिंग पड़ा है। हमने थर्ड हमने इशू यही रेज किया है कि आज के स्टेट में हम लोग आगे बढ़ रहे, वो ये है कि ओबीसी के बच्चों को इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में ट्राइबल के धरती पर हम लोग उसको एडमिशन दिलाए और उसकी फीस स्टेट गवर्नमेंट ये करे। हम लोग ओबीसी के लिए 1850 करोड़ रुपया स्कॉलरशिप देते हैं। ये पहला स्टेट है महाराष्ट्र कि 1850 करोड़ रुपया ओबीसी, केवल ओबीसी के लिए हम स्कॉलरशिप देते हैं एवरी ईयर। वो करीबन 650 कोर्सेस है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो कुछ देती नहीं है। अब हमने नया काम उठाया है कि ओबीसी के लिए महाज्योति नाम की जो संस्था होती है, महाज्योति का इनॉग्रेशन हम लोग जैसे सारथी और बार्टी के धरती पर शेड्यूल ट्राइब मराठा के लिए सारथी बनी थी, वैसा ओबीसी के लिए महाज्योति हम बना रहे हैं। और महाज्योति के माध्यम से कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, स्पर्धा परीक्षा हो, यूपीएससी हो, एमपीएससी हो, फेलोशिप हो, और उसको
स्किल डेवलपमेंट से जोड़कर इनको जॉब अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट करें और उसको मिलाए। इस उद्देश्य से हमने ये काम शुरू किया है। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान भी बजट में, प्रोविजन भी बजट में की गई है और इस माध्यम से अभी ये आने वाले इस साल से इसका ये काम शुरू होगा। इसका ये हम लोग इसमें नागपुर हेडक्वार्टर बनाया है। और रहा सवाल कि मैं एक ओबीसी का इस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर के साथ में, ओबीसी का लीडर के साथ में, मैं आपको प्रॉमिस दिलाऊंगा कि महाराष्ट्र स्टेट का, जैसे हमारे नाना पटोले ने हाउस के अंदर में रखा था, इसका सेंसस हो, हम वो करवाएंगे। हम लेटर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखेंगे। हो सकता है तो महाराष्ट्र सरकार ओबीसी का स्वतंत्र जनगणना करे, स्वतंत्र सेंसस करे। इसलिए हम लोग इस पे वो जोर शोर से आवाज, ये विषय को हम लोग इस विषय को आगे बढ़ाएंगे और वो उसका पूरा करेंगे। बढ़ाएंगे नहीं, केवल चर्चा की बात नहीं। आने वाले दिनों में आपको दिखेगा कोविड खत्म हो जाएगा, असेंबली शुरू हो जाएगी, देन हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू विजय जी। रिस्पांस बोलिए बाबर प्लीज। एक मिनट, जैसा कि वडेट्टीवार साहब ने यहाँ कहा है, तो महाराष्ट्र में ओबीसी मंत्रालय होने से और वडेट्टीवार साहब सर के मंत्री वहां होने से ये सारी योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। इसी तरह से पूरे देश में ओबीसी समाज के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं का प्रावधान करने के लिए केंद्र में ओबीसी मंत्रालय चाहिए और देश के सारे राज्यों में ओबीसी मंत्रालय चाहिए। अगर महाराष्ट्र में ओबीसी मंत्रालय सेपरेट नहीं होता तो वडेट्टीवार साहब के दिमाग में आइडिया होने के बाद में भी ही कैन नॉट इम्प्लीमेंटेड बिकॉज ऑफ द सेपरेट मंत्रालय। he can introduce some scheme and it can be implemented। ये होने के लिए पूरे देश में केंद्र स्तर पर भी ओबीसी मंत्रालय होना चाहिए, सेपरेट अलोकेशन ऑफ फंड होना चाहिए और उसी के आधार पर देश के सारे स्टेट्स में सेपरेट ओबीसी मंत्रालय का सेटअप ओबीसी कम्युनिटी के लिए होना चाहिए। यही हमारा एक उद्देश्य। Thank you, Baban ji. So it's the census is very close, and we've been asking for including the caste census. Update the form and all. I'm not sure what is the status of it. When we met last in Delhi, that was one of the primary demand. Once we know how many people from each constituency or each town or each village that are part of this OBC group, that will go a long way, because that can determine what kind of resources needed to uplift that community. And also, if we can demand the OBC ministry in state and central level, that is the highest priority. If we can take up census and OBC ministry, it's important for us. Irrespective of wherever you are, friends, brothers and sisters, I think you need to take it seriously. And if you don't ask for it, nobody's going to give you and nobody's going to ask on your behalf. So with this, I would like to go to the next question. So why the backlog of OBC in employment in central and state governments not filled up? So as I mentioned before, the numbers are very small numbers, supposed to be 27%, but you're not even getting half of it. So why the positions are not filled in the central and state governments that belong to OBCs? Who can answer this question? Reason is only 1 minute. 100% The question is, as in the case of the scheduled caste, scheduled tribe, then unfilled seats will be carried forward in future. But in the case of OBC reservations, there is they are not keeping any backlog. They are filling with the general classes. Therefore, every year they are taking away. They are de-reserving and taking away and filling up. There is no backlog. Suppose if backlog is there, thousands of posts will come from 1993 onwards, from the date of implementation. No backlog is unfilled. Backlog is filled every year by the general class people. Therefore, question we have to understand, there is no backlog at all. Every year they are giving only 11%, 12%, 13%. Remaining they are filling with the general class. Yes, sir, there are 2-3 reasons why the backlogs are not filled up. The first reason, backlog is reservation 27% नहीं फिल रहा, वो de-reserve कर रहा every year, जब का जब reserve करके उसको दे दे रहा. तो उसी का रीजन मैं सर बताना चाहूंगा. बताइए बाबन जी, बताइए please. If all these 27% posts are filled up from the OBC category,
there will be majority of OBC in each and every institutions of the government. So every political party, they are afraid कि अगर ये 27% लोग ओबीसी के आगे और इनकी मेजॉरिटी हर जगह हो गई तो इस देश पर ओबीसी राज करेगा। और इसीलिए आज 27 साल हो गए, एक भी स्टेट ऐसा नहीं है इस देश में और केंद्र सरकार में भी कि जहां 100% वैकेंसी फिल्ड हुई। हम लोग बार बार डिमांड कर रहे हैं कि आप स्पेशल ड्राइव करो। हमारे महाराष्ट्र का उदाहरण लो तो आज 1 लाख पोस्ट वैकेंट है ओबीसी का, 1 लाख। सेकंड डेंजरस ऐश्वर्या सर क्या हो रहा है, हमारे स्टेट का एग्जांपल देते हैं, सारे स्टेट में भी हो रहा होगा कि इफ द ओबीसी पीपल रिक्रूटेड इन ओपन कैटेगरी, ये गवर्नमेंट के अफसर लोग उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट मांग के ओबीसी के अगेंस्ट में बताते हैं। द पर्सन आर सिलेक्टेड इन ओपन कैटेगरी बट इन रोस्टर पॉइंट he shows that he is appointed in OBC category. That's why also our backlog is declined. So हमारी यही डिमांड है कि हमारा जितना 27% का रिजर्वेशन है वो केंद्र सरकार हो या देश का कोई भी राज्य सरकार हो, वहां पर 100% वैकेंसी फील्ड होना चाहिए और उसके बाद उसकी बात। Thank you. I would like to mention here that see how governments function. See, governments function on the basis of number of vacancies which are generated every year. And why these backlogs don't become priority? Because every time governments tries to fill these kind of backlogs towards the election year. Either they want to fill towards the election year, or they would want to merge with other category of vacancies and want to, or either don't want to do actually. Now, my request is that in the era of social media and in the era of the communication era, we need to continuously bang the state governments and the central government on a daily basis. If we are able to do that, and the demand that has to be placed is to fill posts every year on a calendar basis. There has to be a calendar to fill backlog posts. If we don't have a calendar, we are shooting stars. So there is a need, first assessment and need, and then a calendar to fill the post every year in state and central government. A small clarification to Brother Narahari. It's not like scheduled caste and scheduled tribe. Scheduled caste, scheduled tribe, they are carried forward. Backlog is carried forward. But OBCs are concerned, you take group 1, group A services. If the OBCs are not available, only they will fill up 13 or 14%. Remaining seats will become open. They are filling same year with the open candidate. Therefore, this question we have to understand, because of the creamy layer, the unfilled seats are becoming open and they are filling with the general classes. Therefore, we have to, it's a very checklist. There is no backlog at all in our OBCs are concerned. Government of India, they are not carrying forward backlog. Every year they are filling, it becomes open. After 12 or 13%, remaining seats are become open, they are filling up with their persons. Yes, understood, Justice G. Because we are saying that we do not have qualified people. I would like to clarify that in some states, the backlog is being carried forward. Oh, yes, state government. Sure. It is being carried. So what I am trying to also impress upon is to assess every year and ensure that they are part of the backlog seats and are not filled by any other category. So there has to be a pressure group which we need to create to make it a part of the policy or legal process. That's what I'm trying to mention. Absolutely. OBC community has to create a division so that they can constantly research what positions are open, what positions are filled, and how do we get our quota of the OBC open positions. They may saying that you do not have qualified people. So probably we can showcase who are qualified, why they are denied. For example, when I was in Delhi, the UPSC denied one person
they gave the seat in the open quota, reservation quota, even that person is qualified in the open quota. So that is the kind of injustice we need to, until and unless we have a body from our group, as Narahari said, constantly researching, identifying the numbers and banging the doors and filing an RTI, whatever way we can. I think that's the way to go. Babanji, you wanted to add something? Go ahead. There is one more reason not filling the vacancies. That reason is non-criminal. सर हमारे देश की परिस्थिति ऐसी है कि अभी जैसा 8 लाख रुपया नॉन क्रिमिलियर का लिमिट है, तो जिनका इनकम 8 लाख से कम है उनके बच्चे पढ़े नहीं है, और जिनका इनकम 8 लाख से ऊपर है उनके बच्चे पढ़े लेकिन बट दे कैनॉट बी रिक्रूटेड इन ओबीसी कैटेगरी. दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन. और डीओपीटी जो अलग अलग डिफाइन कर रही है, जो अभी हमारे 271-72 बच्चे आईएसएस से वंचित रहे हैं, उनको स्टेट से नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन डीओपीटी बोलता है कि दिस सर्टिफिकेट इज नॉट वैलिड बिकॉज दे आर डिफाइंड बीपी शर्मा कमिटी फॉर दैट. सो इसलिए इस देश में ये नॉन क्रिमिलियर नाम की कंसेप्ट जब तक नहीं हटती, इट शुड बी डिमोलिश, तब तक के ओबीसी का 27% बैकलॉग नहीं भरा जाएगा. और इसलिए बीपी शर्मा कमेटी का हम लोग जो विरोध कर रहे हैं, ये अगर आ गई, उसका रिपोर्ट अगर एक्सेप्ट हो गया, तो इस देश के एक भी ओबीसी को बेनिफिट नहीं मिलने वाला. सारी 20% सीटें हमें सरेंडर करना. So again, you started that thing, Justice Ishwaraya ji. The next question is related to the creamy layer. If you could take up on the creamy layer issue and enlighten everybody, all the viewers, there are a lot of questions coming on the creamy layer side. Please go ahead. No. This is what Brother Narahari says. He is right insofar as the state services are concerned. Its backlog is carried forward for 3 years, and after 3 years they are de-reserving and filling up open. But insofar as the central services concerned, there is no such rule to carry forward. They are filling. If after OBCs are not developed, they are filling immediately same year with the general category. That is the distinction I wanted. Thank you very much for the clarification. The next question is on the creamy layer subject. A lot of questions are polling in from all over the place who are watching this show. Who can talk about the creamy layer issue? Justice Ishwaraya ji? What is the question? The question is about the creamy layer. Yes. Yeah. Layer is a creamy layer. I have very clearly clarified in my message. Creamy layer is an unconstitutional issue. It is not there in the constitution. It is not there anywhere. But only thing is, creamy layer means is not a socially, educationally backward class. Who is not socially, educationally backward class? The ministers, the governors, the high court judges, the constitutional post, because they enjoy the high status and directly recruited the group A and class 1 officers, because their status in the society is very high. But though salary is much more, if a clerk in the bank or a manager in the bank is only table and chair, nobody recognizes in the society. Suppose a Vade is having the money or this thing, he doesn't have any social status. Therefore, creamy layer issue is very ticklish issue. The question is, what is his status? What is his social, cultural, political, economic, educational status? Therefore, this is very complicated issue, but Supreme Court nor the Constitution doesn't contemplate the income criteria. Income criteria is not there. But whatever, therefore, let them have their expert opinion. We want our 27% reservations to be filled every year. Central government services. What method you are going to follow? Suppose we got then 27 seats out of 100 seats. OBCs got 27. You give 27. Whatever. Suppose first 5 lakhs. What is the percentage of the population? Then you fix up the slabs. Then start giving from the bottom to top till 27 is filled up. That is simple. Suppose 50 seats are there out of 150 seats. How do you fill up from 1 to 50 till 50 seats are filled up? Then don't reserve everything. This is a simple concept, but nobody understands it. Neither the NCBC, nor the Sharma Commission, nor our backward classes also are able to understand what is the creamy layer.
clearly the simple issue. Don't give to the rich man, to the social high status. Give to the most deserving from bottom to the till 27%. That's all. It's as simple as it is. Thank you very much, brother. I think it's important that we take summary of all these questions. So the last question I have from the viewers is, why should the government reserve posts for OBCs at all levels of judicial platforms, from Tehsil courts to Supreme Courts? They're not doing it. So why should not they do it? So I think a lot of people try to touch on this subject, but what is the reason why they cannot do it? Why they are not? This is the, even before the independent, the historical, the discussion, it has been coming. Even that is the reason why Ambedkar said, if you read each article, Article 15, there was they were never used to allow the bathing guards, the shops, the streets, the restaurants, and the untouchability, the discrimination. Therefore, now everything has been put a full stop under the Constitution, but still the Constitution, as Tejasvi Yadav said, they doesn't want to implement the Constitution. They would like to rewrite the Constitution. They would like to redone the Constitution. Judiciary, executive, legislature. They are the ruling class, we are the working class. There is no reason at all, because our share is being enjoyed by them. They would like to continue to enjoy. They would like to perpetuate the injustice which has been meted out centuries together, and they would like to continue like this one. Under the guise of the then when the Mandal Commission came, then Commandal issue they have taken. When people are awakening, then Ram Mandir has come. Then all our people, then Jai Ram, Sri Ram, Jai Ram. Then they, whether all these things are going to give education or employment or the social status or development, this is the ignorant. We are living in the illusion, in the ignorance, in the superstition. Thank you, brother. I think this summarizes a lot of questions that we received, and we have 3 more minutes to go. I just want to summarize the entire conference. First is, bottom line, we need to network at every level: village level, mandal level, district level, taluk level, state level. We need to have true representation of our leadership. And if the leaders are missing, we need to create the leaders. We need to train the leaders. Until and unless we enlighten our people, they're not going to lead us. This generation, we have Justice Ishwaraya ji, we have Narahari ji, we have Praveen Kumar ji, we have Taiwada ji, and I see our Dr. Vijay from Hyderabad, and also we have our great leaders, Srinivas there sitting in the video. But it's wonderful to see all of you. The question is, how do we send this message to the grassroots level and also create our leaders? That's number 1. Number 2 is enlightening them what are the existing rights we have granted through the Constitution, whether it's a social justice rights or political rights or employment rights or education rights. They're also not aware of it. That needs to be some team of our group has to identify what are the existing benefits that we have and whether they're reaching to the grassroots level or not, and where is the problem. If we can clear that clog and make sure that the flow happens, which are constitutionally granted to receive those benefits at the grassroots level, and also based on this caste census that we're going to have, what are the real needs of our people at the grassroots level, and how do we make them realized? So we all have to unite together and identify those needs and demand for those things. And also we talked about the not getting the 27% being implemented, and we need to have a committee that can closely study which states, which central positions that are not being filled and why they are not filled in spite of having our qualified candidates. If we feel that more education is needed to create our qualified candidates, I think we should focus, identify such people who are capable of becoming IAS, IPS, IRS officers, and let's fund those people. For example, we have started through this Padmashali community, which I'm part of in USA. Narahari ji is helping us. So the people who qualified to go into civil services,
they completed mains and they're going to interviews. There might be some coaching needed, and there's some premier institutes that charge some money to coach them, and we are here to fund them. In the same way, all other BC communities, if we can create such groups to encourage our people to take the IPS, IRS, IAS positions, they are in the system for 10, 20, 30 years. So they can definitely have a soft corner to enlighten our people. That's another area that we can do, educate our people in the premier areas where we feel that they're not filling 27%. Sometimes they claim we do not have enough qualified candidates, even their reservation is there. So in order to take advantage of the reservation, we need to prepare our candidates. Then the next thing is political empowerment. That is the key. I strongly believe in getting the political empowerment that will lead to economic empowerment, that will lead to social justice automatically. So all the leaders everywhere, there's a possibility of we contesting a seat. Let's say we have a more than 50% of our people in a particular constituency. And if no party is giving a ticket, I think this OBC's communities should come together and field their own candidates. Winning or losing is not the issue, but fielding the candidate is the first step towards. If you don't buy a lottery ticket, you cannot expect to win the lottery. So first step is to make sure that we have a candidate fielded in coming elections, whether they're local elections or state elections or central elections. Then the next thing is the political thing and employment. For example, now majority of the people are from OBC are suffering because of the COVID. They used to work in the cities. Now the cities are not capable of handling them. They all sent to their villages. Now they are all unemployed. Most of the 90% of the working class is unemployed because of the COVID, otherwise also. So now how do we reskill them? And using the skill development funding, whatever we have, retrain them and encourage them to develop their own cottage industries or small scale industries in the local, their villages, because they're now afraid of going back to the cities because of the situation. And why do they need to go back to the cities? They should enjoy their place wherever they are, but we need to provide them all the connectivities. It could be electronic connectivity, it could be health connectivity, it could be education connectivity, and it could be a grid independent power connectivity, so that their financial connectivity is established. They don't need to migrate to cities and crowd them. And they will be very happy to flourish in their own neighborhoods. I think we should pay attention to what kind of funds are available to retrain, reskill these people who are unemployed now, and so that they can earn their living respectfully. So in the healthcare side also, there's a lot of issues that are happening. I'm personally involved trying to help the COVID patients who are calling me. 10, 12 calls I receive on a daily basis, not able to find a bed. And in a daily normal life itself, we do not have a proper healthcare system for our people in the villages, in the second tier, third tier cities. And they need to come to Hyderabad or Chennai or Delhi, someplace to get their treatment done. It is very expensive for them to get those kind of facilities. And we need to look into the healthcare system of our community. So make it affordable quality healthcare, make it affordable quality education, and look into employment opportunities for our people through skilling and reskilling, and prepare them for the industry 4.0 kind of requirement. And also another thing, we need to encourage our entrepreneurs. There's talent everywhere. If again, as the Dr. Kalam could become a scientist and a Bharat Ratna and a president, each one of us have a unique talent. If we could encourage our people and inspire them and motivate them to become a successful entrepreneurs, instead of writing a resume, they can write a business plan. So these are some of the things. Until and unless we have a sincere and wholehearted effort into it, it's not going to happen. And asking somebody else to help us when we cannot help ourselves, it's not right thing to do. So I think this is an opportunity COVID gave us to connect us globally. So I'm getting reports over 5 crore people watching this show. At least we are inspiring some of these people, and we need to have a good recruitment process in place to recruit our people who want to volunteer for this OBC upliftment movement. And there has to be some kind of systems, use technology as much as possible, develop a mobile app or develop a website. Every organization who belong to OBCs, STs should strive towards connecting our people to start with. Once we get established the connection, then we can identify the people who can work for this cause. And then we can have an orientation sessions or training sessions in different fields. If they want to become an engineer, we can coach them. If they want to become a doctor, we should be able to coach. If they want to become a politician, we should be able to coach in an organized way by engaging our
seniors and our people in respective fields. For example, Narahari ji and Praveen ji can volunteer themselves to coach the people who are aspiring to be civil service candidates. And Vijay ji and Nana ji, probably those kind of people who are already in political system can come up with a way to train our people so that they can avail the political process and also become leaders. And Justice Ishwaraya ji, if you can see how the judiciary process can be transformed so that our people can become judges and in respective states, high courts, as well as Supreme Courts. Every area, there's so much of opportunity, but we are not prepared and we are not united. It's time to unite, and we should do more of these sessions on a regular basis to bring in different types of people into the calls. And technology is available. I'm willing to volunteer myself to do this kind of stuff. And it's really painful to see how our people are suffering, especially during COVID time. So with this, I would like to thank all of you on my side. Now I would like to invite our next, we need to say a vote of thanks to our people. Let me get Geeta ji. Are you on the call? Yes, she's on. Yeah. Please, Geeta ji, please do the vote of thanks. Namaste, Jai OBC. MCs, can you put in the speaker mode, please? Yeah. Mode? Yeah, it is on the speaker mode. Can you hear me? Yes, we can. Go ahead, please. Geeta ji, go ahead. Jai OBC. On behalf of RASHTRIYA OBC MAHASANGH, it is my privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this important occasion. Specifically, Dr. Hari Ipannapalli, Chairman AIBCF Advisory Council and Chairman Lead India Foundation USA. सर, हमने अभी तक आपका जो भी पूरा सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपने इतना सारा आपका स्टैटिस्टिक्स और आपने इतना इंफॉर्मेशन जो जिस तरह से आपने कलेक्ट करके अभी हम लोगों ने जो डिस्कशन किया, तो उसमें मुझे लगता है कि इस तरह से अगर काम हो जाता है हमारे यहाँ, तो डेफिनेटली पूरे ओबीसी जो है हमारे यहाँ के, डेफिनेटली उनको सभी जन को बहुत मदद होगी ये प्रोसेस में. आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर यू. हमारे डॉक्टर बबन तायवाड़े, प्रेसिडेंट ऑफ राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ही इज ऑलवेज इंस्पायरिंग टू ऑल ऑफ अस बिकॉज ऑफ ही एक्चुअली नागपुर का जो हमारा संगठन जो है ओबीसी का और ऑल ओवर द महाराष्ट्र एंड देन इन इंडिया, मुझे लगता है कि उनके कारण बहुत ही एक स्ट्रेंथन हमारा एक ओबीसी का संगठन हो गया, जिसके कारण हम सभी आप जैसे महानुभाव लोगों के साथ हमारा एक इंटरेक्शन हो रहा है और हम सभी ये वेबिनार के माध्यम से डेफिनेटली सभी बहुत सारे ओबीसी जो है वो समझ रहे इश्यूज को समझ रहे हैं. आज के हमारे इनॉग्रेटर जो है नानाभाऊ पटोले, स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली महाराष्ट्र, उन्होंने तो ओबीसी के लिए जिस तरह से काम किया है, असेंबली में भी काम किया है और स्टिल उनका जिस तरह से काम चल रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही थैंकफुल उनका जो एक्टिविटीज है. सो अगेन आई एम थैंकफुल टू द नानाभाऊ पटोले. ईश्वरिया सर, ऑनरेबल जस्टिस सर को भी हमने जो भी हमारे पहले वाले भी हमारे जो अधिवेशन हुए हैं उसमें भी हम सर को मिले हैं और सर के द्वारा बहुत सारा जो जुडिशरी का जो एक सिस्टम है वो भी समझ में आ गया. और मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वरिया सर के कारण सुप्रीम कोर्ट की जो केसेस है, जो जिस तरह से सर उसको फाइट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ओबीसी के लिए वो बहुत ही बेनिफिटेड रहने वाला है. थैंक यू वेरी मच सर. हमारे स्पीकर्स, हमारे गेस्ट जो थे तेजस्वी यादव, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उन्होंने जो ग्राउंड रियलिटी के बारे में जो बोला है कि ओबीसी के बारे में जो ग्राउंड रियलिटी उन्होंने जो एक्सप्लेन करी है, मुझे लगता है कि दैट इज वेरी मच ट्रू. और ये एवरीवेयर ये हो रहा है कि हम लोग जो है ओबीसी के जो लोग हैं वो रियली उनको बहुत अवेयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है. ये तो हर बार हम लोग ग्राउंड लेवल पे ऑल द टाइम काम कर रहे हैं, तो तब हमें समझ में आ रहा है. आई एम अगेन थैंकफुल टू ऑनरेबल विजय वडेट्टीवार. उन्होंने भी हमें जो गाइडेंस दिया है कि हम लोगों ने किस तरह से ओबीसी को यूनाइट हमने करना चाहिए, और उसके लिए उनके जो प्रयास चल रहे हैं, महाज्योति का एक हमारे यहाँ नागपुर में उसका सेंट्रली एक लोकेटेड ऑफिस भी आने वाला है, जिसके कारण हमारे ओबीसी के बच्चे
बहुत उनको उसका फायदा होने वाला है। आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर टू हिम। हमारे स्पीकर जो थे कि डॉक्टर RS प्रवीण कुमार IPS सेक्रेटरी जो तेलंगाना में है, उन्होंने जो एक एजुकेशन के बारे में जो बताया है कि इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होना चाहिए कि जिसके कारण वो हर एक जन को एजुकेशन मिल जाएगा ऑन द ग्राउंड लेवल, ग्रास रूट में जिस तरह से एजुकेशन जाना चाहिए, बच्चों को मिलना चाहिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन हर स्टेट की तरफ से अगर होता है तो दैट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिटेड फॉर अस। इसलिए मैं डॉक्टर RS प्रवीण कुमार को फिर से थैंक्स देती हूँ। उसके बाद हमारे नेक्स्ट जो स्पीकर थे डॉक्टर हमारे P नरहरि सर IS, उन्होंने जो फोकस किया कि नेटवर्किंग के ऊपर, मुझे लगता है कि नेटवर्किंग इज अ वेरी मच वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग ये वेबिनार के माध्यम से हम लोग सब लोग जुड़े हैं। मुझे लगता है कि इसी तरह से अगर हमारा जो कोविड का पीरियड चल रहा है जिसके कारण हम एक दूसरे को नहीं मिल सकते, बट डेफिनेटली थ्रू दिस वेबिनार हम लोगों के जो भी हमारे इश्यूज है वो अगर हम लोगों के साथ जो स्टेट में जो लोग काम कर रहे हैं ये इश्यूज को लेके, उनके साथ अगर एक अच्छे तरह से नेटवर्किंग हो जाता है तो डेफिनेटली एवरीबडी इज वर्किंग फॉर द OBC। सर हम बस इसमें थैंक्स गिविंग के इसमें मुझे एक बहुत ये एक लगता है कि हम लोगों का एक इंटरेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरेक्शन जब तक नहीं होगा तब तक हम लोगों को नहीं बता पाएंगे कि एग्जैक्टली हमारे इश्यूज क्या है। सो आई एम अगेन थैंकफुल टू नरहरि सर। Again, it is very much important that without the support of all the organizations, we cannot work on these OBC issues. उसमें इम्पोर्टेंटली उनके जो सभी ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है, उन सभी को मैं थैंक्स दूंगी। ऑर्गेनाइजेशंस में है ऑर्गेनाइजेशन CIC ग्रुप, INC, विजन डिजिटल इंडिया, लिबर्टी फाउंडेशन, आई स्टैंड फॉर नेशन, AIB CF NRI वाला मानवता, सॉरी NRI वाला मानवता, लीड इंडिया फाउंडेशन, PC वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, OBC महासभा, नेशनल फोरम फॉर एनफोर्समेंट ऑफ सोशल जस्टिस, पिछड़ा वर्ग विकास मंच एंड OBC नेशनल। उसी तरह से OBC राष्ट्रीय OBC महिला महासंघ। मुझे ऐसा actually I can say very proudly that in Nagpur, basically in Nagpur, राष्ट्रीय महिला OBC महासंघ जो है वो ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट पे बहुत ज्यादा काम कर रही है। पूरे जो हमारे सुषमा फड़ है, बाद में हमारे बाकी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो है वो सभी लोग हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं और जिसके थ्रू एक ग्रास रूट में व्हाट इज OBC वो उसका बताना कि हमारे राइट्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमें लगता है। उसका अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अपार्ट फ्रॉम दीज अवर मीडिया पार्टनर, उनको हमने तो थैंक्स बहुत ही ज्यादा इसलिए देना चाहिए कि बिकॉज ऑफ देम वी रीच टू एवरीबडी। उसमें है माना, देन TV5, V5 नेशनल न्यूज, देन GK TV, Free Express, Top Telugu, Radio 8, Voice Today, then US1, GNN Telugu NRI Radio, BCN News, and remaining all the Sakshi TV, and not only these persons but the persons who registered for our webinar and the viewers. I am very much thankful for all the persons who join our this webinar. Thank you very much. Yeah, Rekha ji, I was reading about you. My apologies, I announced your name wrongly. So it's wonderful to see you. You're doing a great service on the ground. So we want you to be safe when you meet people, and we need people like you to save the world. Thank you so much for a great vote of thanks. And I would like to special thanks to TV5 and Mana TV, the CEO Sridhar Chillara, who helped us in making this broadcast and all the Zoom sessions and everything. Thank you KCR from Hyderabad who helped us. And also our technical team here in the US, Srinivas Guduru, Secretary, Lead India Foundation, Ram Maruri, Managing Trustee, Lead India Liberty Foundation, Srinivas Komatpalli, our webmaster, and we have John, our webmaster on the AIBCF website. And I would like to thank our MCs,
Keshav and Samir, who did a wonderful job. So with this, I think we need to do more of these sessions moving forward. COVID has enlightened us that we can get connected through technology, whether COVID exists or not. Let's use technology to get connected. As Rekha ji said, until and unless we get connected, we do not know about each other. And once we know about each other, what we can do, I think we can engage the skills to enlighten our community. And thank you all once again. And we look forward to working with you. I would like to say that I would dedicate myself to uplift our community, whatever way I can contribute. And if we can transform one soul, similar to what Dr. Praveen Kumar mentioned about Purna Malawat, who under his mentorship, she was able to climb the Mount Everest at the age of 13 years and 8 months. So if we could enlighten one soul like that, what all we need, only few people like Dr. Kalam or Phule, Ambedkar. So those are the souls transformed. I think there are so many hidden gems out there that we need to identify and polish them and make our leaders. And we should set aside all the egos and get united, irrespective of whatever agenda you have. We have one common agenda to uplift our OBC community, working with our brothers and sisters of SCs and STs. Together we cross close to 90% of the population. I think we are the majority, and as per the Constitution and for the principles of democracy, the majority should be the ruling for the people, by the people, of the people. I think we should remember those principles. And it's almost time for us, and we extended the show by 15 minutes, but it's a wonderful show. A lot of intellectuals joined us today, and a lot of debate happened, and we continue to do this dialogue. Thank you very much, and be safe. Thanks to Thank you. Thank you very much. Jai OBC. Yes, Sachin Rajurkar is the backbone of this entire coordination. Thank you, Sachin ji. And also Roshan ji did the social media promotion from Nagpur. And we have so many other people who helped us on this show. And we are ever grateful for them, for their services. There are so many hidden people they didn't want. For example, I wanted Sachin to come and speak. And he said, no, sir, there are so many people that they want to speak. I will yield my time to them, but only I will work. I think we need more people like Sachin to help us. Thank you so much. And we are signing off. Be safe wherever you are. Thank you. God bless you all. Wonderful, Hari. It's a great job. Thank you very much. Thank you. And there will be video will be available, and we will circulate it as soon as it becomes available. And let's do more of these events, brother. Thank you.